SMEs. Well, we don't have that data. Certainly, we don't have that data. And it's not, I mean, we don't take that data from the taxpayers in their returns, so that data we will not have. But certainly, you know, we are all aware of this huge problem of timely payments not being made to the MSMEs. So in that direction, you know, this is certainly a positive step. Coming to your first question on the exemption-less regime, let me say that for companies, the 22% tax regime that we got, 61% of our tax now, the corporate tax, more than 60% is actually coming from the exemption-free tax regime. Individuals' data we will not have, but we are very hopeful that this particular scheme for individual taxpayers, the PIT, I think the majority would prefer. I mean, all of you, if you all do your own calculations, I think majority here would be now wanting to shift irrespective of their incomes and the deductions and exemptions that they claim. They would be finding it more attractive to shift to the new tax regime, majority of them. Ma'am, very good afternoon. Congratulations on a great budget. It's very clean, simple, nicely done. Ma'am, one quick question on CAPEX and one more on petroleum subsidy. Ma'am, your CAPEX for RE is lower actually in terms of the spend as of now. But the target is, you know, greatly stepped up for FY24. So what gives the confidence that it will be all utilized? That CAPEX RE is lower, ma'am. 7.28 versus slightly lower. And a big jump for FY24. So what gives the government the confidence that all of it is going to be utilized and well spent? That's one, ma'am. And second, ma'am, on the petroleum front, the LPG subsidy has been kept pretty low. You had announced certain additional measures last year in May, along with the deep cuts in excise on petrol, diesel. So what happens to those announcements regarding LPG subsidy? They have not been rolled over. And plus, ma'am, there is a demand coming in from oil cores now after LPG losses that you have made good by giving them money, that something needs to be done on fuel also. So would the government consider? What was the last bit? Something has to be done for who? Basically, demand coming in from oil cores in terms of... oil marketing companies. Yes, cash compensation the money for which fuel. is now being given is not for that. Not for that, ma'am. So, all of it. So, on your first question on capital expenditure. So, yes, the revised estimates are about 97% or 98% of the budget estimate. Yes, there is a slight deviation. It's mainly on the state capital expenditure, which is falling short of the 1 lakh crore. Actually, the central capital expenditure is going to exceed the budget estimates. State capital expenditure is not expected to reach the 1 lakh crore figure because some portions of the state capital investment scheme have reform conditions. So some states have not been able to meet some of the conditions. Therefore, we expect, I think the figures are there, about 76% of the state capital expenditure scheme is likely to be spent. That's the revised estimate. So the shortfall is actually on the state side, not on the central side, point number one. What gives you the confidence for next year? I think if you look at the allocations that have been made, they've made in actually the increments are in 4 clear areas. One, railways. The railways has enough projects to absorb the additional capital expenditure. The second is highways. They have adequate projects running to absorb this capital expenditure. The third is states, 30,000 crores. Now, yes, there will always be a challenge, but I think the states are gearing up now. This 2 years of this experiment has helped them to improve their spending capacity. And we are also seeing an uptick in the second half of this year on the state capital expenditure. So I'm reasonably confident that the states will absorb the 1,30,000 that has been provided. And the other big item on the central side is the petroleum capital expenditure, which is for retrofitting of refineries to meet emission standards and pollution standards, and partly for augmenting our strategic reserves. So I'm quite confident that we'll meet the expenditure targets. Please.
तरुण शर्मा फ्रॉम जी बिजनेस। मैम, जो डिसइन्वेस्टमेंट का जो टारगेट है वो 65,000 से 50,000 किया है और नेक्स्ट ईयर का 51,000 किया है। तो मैम, इससे हम ये समझें कि जो दो गवर्नमेंट बैंक का जो प्राइवेटाइजेशन होना था और जो दो इंश्योरेंस कंपनीज का जो प्राइवेटाइजेशन होना था वो अब 2024 के बाद ही संभव हो पाएगा, उससे पहले नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैम जो टारगेट ये कर रहे हैं। दूसरा सवाल मेरा संजय सर से है। जैसा कि आपको विदित है कि डिसइन्वेस्टमेंट तो मार्केट कंडीशंस और कई चीज़ों से निर्भर करता है, तो उस हिसाब से जो प्रैक्टिकल और प्रूडेंट टारगेट है वो रखा गया है। From the New Indian Express. Ma'am, what was the need to lower effective tax rate for high income group at this point in time? And also tax collection at source has been increased from 5% to 20% or on overseas tour package. So what is the reason behind this massive increase? See, the tour packages are generally taken by people whose effective tax rate is certainly more than 30%. So if we are charging them 20% TDS, I don't think it is high. Our attempt always has been to charge TDS at more or less similar rates, if not exactly the same rates. So that answers your question number one. Question number two on, I think you are referring perhaps to surcharge, which has been reduced. Well, our rates, the highest tax rates in our country were amongst the highest, even more than, some of the developed countries. And so, in any case, it was introduced as an interim measure, and so that has now been reduced, so that the effective tax rate, highest effective tax rate becomes 39%. I'd just like to supplement that. There is a consistent theme, if you see, both on the new tax regime and on the changes that you're seeing in this budget, that the move is towards lower rates, but fewer avoidance measures and exemptions. So if you look at high net worth individuals, there are a number of tax avoidance removal measures in this budget, along with the reduction in surcharge. So if you look at market-linked debentures, if you look at very high value insurance policies, and a few other measures. So the marginal rate is coming down, but some of the devices used predominantly by those in that highest marginal tax rate are also being rationalized. So it's not necessarily a net reduction, it is a reduction from a high marginal rate inducing certain avoidance devices to a lower marginal rate with fewer opportunities to avoid. 74, please. One's mind being part of a political party. But consistent with what we believe, we placed our emphasis and priorities on those. And that's what you've seen in the budget. मैडम, मेरा सवाल है आपसे। मैं संजय शर्मा हूं, लोकमत अखबार से। मैडम, आपके बजट में विपक्ष की तरफ से कोई ज़्यादा प्रतिक्रिया नहीं है ये, लेकिन इस बजट से महिलाओं को काफ़ी उम्मीदें थी। घर की महिलाओं को जो महंगाई से पीड़ित थी, रसोई गैस के सिलेंडर के दुगने दामों से पीड़ित थी, कहीं ना कहीं आटे से लेकर के रोटी तक सारी चीज़ें महंगी हो गई है। तो क्या इससे आपको लगता है कि कुछ इसमें महंगाई पे भी फर्क पड़ेगा और घर की जो रोटी है, जो घर की जो रसोई का जो सामान है, उसमें इस बजट से कुछ फर्क पड़ेगा? गवर्नमेंट का निर्णय को देखे होंगे कि
गेहूं के लिए मार्केट में रिलीज करने के लिए आदेश हुआ है, जिससे गेहूं के दाम कम होने के इतना क्लियर इंडिकेशन है, जिससे सीधा घर में रसोई में फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा। सो उसको आप बोलना नहीं है, ये नहीं है कि मैं उसके ऊपर कुछ बजट में नहीं बोले, मगर बजट से बोलने से पहले एक्शन ही हो गया है ना, कि घर की रसोई के लिए गेहूं आटा के लिए मार्केट में रिलीज करने के लिए निर्णय सरकार ऑलरेडी कर चुकी है। एक मिनट। साथ ही साथ जो है महिला जो है वो भी एक परिवार का सदस्य है, तो जो रिलीफ जो इतना टैक्स पर्सनल इनकम टैक्स में दिया गया है वो भी परिवार के पास में और महिला के पास में आएगा, उसके हाथ में आएगा, जिससे वो अपना घर का खर्चा चला सकती है। सो वो भी एक महिला के लिए, हमें नहीं देखना चाहिए कि महिला के लिए नहीं है, वो भी महिला के लिए एक बेनिफिट है। गेहूं पुरुषों के लिए भी है और महिला के लिए टैक्स भी है। Hi, ma'am. Meghna Mittal from ET Now. The fiscal glide path that you have given is 4.5% by 2025-26, which may be considered slightly bold. But does it also indicate your confidence in continuing tax buoyancy in the coming years? Somnathan has already answered it. Yes, tax buoyancy, as you saw even yesterday, GST collection figures have come. Direct taxation buoyancy is also observed in the current year. That is one thing. I think to the credit of this team, there's been a very robust management of macroeconomics. That certainly bears an impact. So all of us might talk about this particular step or that particular step, but I think together, revenue, expenditure, disinvestment, banking, all of us together have worked in such a way that where you can earn more through tax avoidance related measures, and similarly where you can bring in more people into the tax net, you are taking steps. Similarly, prudent ways of effective expenditure without cutting down expenditure, committed expenditure or other expenditure, are all ways in which you're making money mean more. And for every rupee that you spend, you get a better set of returns. So I think efficient management also has a very big role to play here. I just wanted to add to your question. The estimates in the budget, the revenue estimates in the budget, do not assume a buoyancy greater than 1 for the coming financial year. It assumes a buoyancy of 1. Gross taxes are expected to grow by the same 10.5% by which we have estimated the GDP to grow, which is slightly lower than the figure implied by the economic survey. And therefore, we are assuming only a buoyancy of 1. But if the experience of this year is repeated next year, then it may in fact be more than 1. But we have taken a conservative assumption. And I think the very fact that the commitment to 4.5% was reiterated word by word in this budget gives you an indication that we feel that we have the means and the ability to reach that target by 2025-26. I would also point out that many of our expenditure increases are on discretionary spends. We have kept a very tight lid on the irreducible types of expenditure, and therefore there is room in the budget, both on the revenue side and on the expenditure side, for us to reach that fiscal deficit target by 2025-26. And it is not lightly that the finance minister has reiterated it in parliament today. Ma'am, Timsi Jaipuria from CNBC TV 18. Ma'am, I have two questions. Firstly, on the TDS reforms, you've come out with two specific reforms. For one, 20% TDS on foreign investments. Why has this been introduced? Is it to curb the flight of capital or investments which was going outside the country? And secondly, on students who are going outside to study, on that also the TDS has come, there's a 5% that has been levied.
or it has been it has been reduced? There is no change on education or absolutely not. That's wrong. Your facts are wrong. But what happens to the amount that one spends in staying there as a Timsi, student? first correct the thing which you've said, because yours is a very powerful voice, and that can spread among your dosts, and that can go out. No change has been made for education or health purpose, LRS. Please, I hope my voice is audible much more than Timsi's. Thank you for correcting me, ma'am. But on the foreign capital, on the foreign investment, the TDS of 20%, if you could I already explain answered the I rationale. think this question was asked, and I already answered it to say that this is actually coming from income, and the income tax rates for those categories of people who are using this LRS to send money outside is much more than 20%. And so they were in any case, to pay for the tax. And in case they don't have to pay for the tax, they can always get a refund. It is our impression, and there is enough information to indicate that there are quite a lot of people who are able to make these remittances, but whose tax returns are disproportionately low compared to what they send as remittances. Now that means if you don't collect the tax at source, you have to take measures later to catch them. That is much more difficult. If you are able to make remittances to invest in a property in Manhattan or in a stock brokerage account in Dubai, or if you are going to take a 30-day tour of the world, almost certainly your effective tax rate will be 20%. So, yes. We have learned from both the economic survey and the RBI report that there's a lot of public investment and private consumption. Are you still happy with the private investment? Are you still expecting it to grow? Or do you think for the moment it is only public investment that will go on? Hi, yesterday in the press conference, we answered this question, and we also had a slide up there in the presentation we made yesterday that private capital investment has been improving every year in the last 3 years. For example, in the first half of 2021, based on quarterly earnings reports filed by listed companies, the capital expenditure was 2.1 lakh crores, which increased to 2.4 lakh crores in 21-22 in the first half, April to September. And 22-23, it has gone up to 3.3 lakh crores. And then you look at the RBI survey on capacity utilization and investment spending plans of the respondents. There is a very clear sign that many private sector companies are looking to enhance their capital expenditure. So both in terms of intent and in terms of actual spend, private capital investment is showing very clear signs of revival. Thank you. Ma'am, this is Ujjwal Narayan from Newsrise. Ma'am, this is your 5th budget, and when you started in the first budget, you talk about India reaching to a 5 trillion economy by 2025. So just I wanted to know what is the situation, because yesterday CA has put forward another goal post of becoming a 7 trillion economy in next 7 years. So what is happening to that target? That is my simple question. We are moving along to achieve our targets, both mine and his. We'll achieve, we'll achieve. Good afternoon, ma'am. This is Chetan from India Today Group. Ma'am, while calculating the fiscal match for FY24, how did you assume the disruptive variables like the crude prices and, of course, China unlocking and its impact on commodity prices? What was the benchmark that you were thinking behind the rationale? This is a question that keeps coming every budget, and I keep giving you the same answer. That there is no part of the budget mathematics that has a crude price number as an input in any spreadsheet. See, because there is no direct subsidy on any petroleum product. Unlike the fertilizer price or the price of the MSP, these have direct impacts on the budget. The petrol price would have an impact only if it triggers some major change in the tax system. Otherwise, the petrol, diesel,
oil prices do not directly affect our budgeting. So it is not that there were days, maybe 10, 15 years ago, when there was a lot of subsidy on these commodities. At that time, a crude price assumption was inherent in the budget. Today, there is no inherent crude. The assumption we are making in the budget is only that there will be no subsidies on petrol and diesel, and that global prices will be such that there will be no subsidies. What the global price will be, I don't need to make an assumption. So no assumption has been made. Confusion since last year when people referred to what was said in the economic survey as though it was said in the budget itself. The budget didn't say it then, the budget doesn't say it now. मैं आमिर हूँ न्यूज़ नेशन से। पहला सवाल तो ये कि जब शुरुआत हुई थी एक तरह से मोदी सरकार की, तो कहा था कि अर्थव्यवस्था को बेहतर करने के लिए कड़वे घूंट पीने पड़ेंगे और बहुत ही कड़े मेजर्स लिए गए स्टार्टिंग में। लेकिन आज ये देख रहे हैं कि सरकार ने कड़वे घूंट पिए हैं जनता को खुश देखने के लिए। तो क्या ये एक चुनावी बजट है, इसको मानती है? और पहला ये, दूसरा ये कि इनकम टैक्स में जिस तरह से जो छूट की सीमा है, जो पहला फेज़ है आपका जिसमें 7 लाख तक की छूट है, तो उसमें वो फेज़ आपको लगता है कि इससे राजस्व पर भार पड़ेगा? कितना भार पड़ेगा, कोई एस्टिमेट है इसमें? We have said it in the budget speech itself as to what is the net revenue foregone. उसका घोषणा ही कर चुके हैं हम, हिडन नहीं रखे। So वो आ गया है 35,000? 35,000 Direct taxes 37,000 crore, indirect taxes 1,000 crore, additional revenue through indirect taxation measures 3,000 crores, and so net is 35,000 crore. This is Anuradha from Economic Times. In your budget speech, ma'am, you spoke about the review of financial sector regulators. So can you elaborate a little bit more on that? Something? Some of these exercises, when the regulations are brought in, they serve a purpose. Thereafter, the economy changes. So all the regulators have been doing it as part of their exercise, but there's a time now to take up a comprehensive review. And you will recall, RBI had formed a committee. They did it in 2020. They came out with a report in 2021. That is an ongoing process, and other regulators also will travel in that direction, that their regulations are what the economy needs today. Whatever tweaking is required, they will take up that steps. There's their own review, not by them. Ma'am, congratulations on your penultimate budget. And ma'am, am I audible, ma'am? Congratulations on last full budget, and I just wanted to understand, you have mentioned, alluded to Banking Regulation Act amendment and Banking Companies Act amendment. Is it an indication that this year we'll see privatization on that front, public sector banking front? And if you could also throw some light on what kind of amendment it will undertake, apart from, allowing public sector bank for privatization. These measures are for improving the governance of the boards and then investors' protection, etc. These are not to do with any disinvestment or the privatization measures. These are the different set of measures. Over a period of time, the things have changed, and the Banking Regulation Act also fall in line, or not fall in line, has to be aligned with the present day needs, what the directors are, who can be there, what their terms are going to be. So those kind of amendments are there. And one component, of course, is on the investors' protection areas as well. Good afternoon, ma'am. I'm Rima Sharma from Potibimba Live. My question, my question is regarding MSME sector in the northeast, especially in Assam. During pandemic, that Assam handloom sector and bamboo sector badly affected. Many artisans forced to close their work. So in your budget,
you have saying something, MSME sector, you have given some relief and widen the possibilities. So as Gamusa also getting GI tag this time, so do you have any special relief for the Assam and Northeastern artisan, especially in the handloom sector and bamboo sector? In the last year's budget itself, I think for sustaining livelihoods and also making sure that the Northeast livelihoods are attended to, we came up with a specific program called PM Divine for the development of Northeast. And that was executed through the Northeastern Council. So that program continues, and that will take care of livelihood related, whether it is in the weavers or in any other such community. But after getting the GI tag in the Gamusha, do you have any special package for the encourage to the handloom sector? So that is something which the state government will have to tag along with the existing programs, either through the handicrafts program, the artisan and other things that we're coming up with, for which the rules will come out, either they can use it, or the textile ministries. I'm sure they can always find out from the textile ministry for GI tagged Gamusha, they can ask for a dispensation. So this is possible, but that is for the state government to interact with the respective ministries. So, can you a little bit elaborate what kind of I can't elaborate more, ma'am. You should ask the state government to deal with it for the respective ministry. In your budget relief, what kind of relief you have given? Can you little bit elaborate it? In my budget relief. The MSME sector. For MSME or for Gamusha or for GI, what are you asking? I'll send you some information. Ma'am, let's move on with other questions. Good evening, ma'am. Arup from Business Standard. Ma'am, in this year's fiscal policy statement also you're speaking about unprecedented global headwinds and challenges. And again, you have not given forecast for the two succeeding years, in this case FY 24-25 and 25-26, although you have an internal consolidation roadmap. So are we going to see this as a new normal where you're not amending the FRBM Act again, and you're not giving two succeeding years forecast, but you will continue having an internal roadmap? Yeah. Yeah, but you're not amending for the third consecutive year, you're not amending the FRBM Act, and you're not giving two succeeding years targets. Yeah, but we have given a glide path, and we are every budget stating whether we are aligning with the glide path given or not, right? So that pandemic was the new normal for 2 years, hasn't it been? Hi, ma'am. Siddharth from Money Control here. The gross borrowing number is 15.4 lakh crores. Net is the gross borrowing is 15.4 lakh. Net is 11.8 lakh. Especially with real interest rates returning to positive territory in the last few months, with the RBI hiking rates, do you see borrowing costs for companies rising, especially and perhaps the government crowding out the private sector, and could that impact private investments? So I think the question of crowding out, actually the increase in borrowing over the previous year is 8%. The economy has grown at a nominal rate of 15% over this same period. So this is a level of borrowing which I think will not lead to any incremental crowding out. In fact, as a percentage of the size of the nominal economy, the total gross borrowing is actually going to be lower in 23-24 than in 22-23. So incremental crowding out, I think, is not a significant issue, and that I do not think will lead to any impact on borrowing costs in the private sector. This is reiterating that point, that expected the required borrowings for the next year are of the same order what they are in the current year. Of course, the size of the economy has gone up. So it is not that the more money is being taken out of the savings which are available into the economy. So we don't see that impacting because it is of the same order. And even if you go 2 years back and just increase by nominal rates, the borrowings are, net borrowings are of the same order. In fact, they are less than 2% more than the actuals. The figures stated were, I think, for the BE, but actually it will be only,
estimates are that it will be less than 2%. Economy is nominally expected to grow at more than 10.5%. So, I mean, that should answer your question. Ma'am, Aishwarya Paliwal from India Today. Ma'am, opposition parties have been calling this Nil Batta Sannata not good enough budget. Your comments? Follow your Hindi. Would you say that again? Ma'am, they said not good enough. Most of the opposition parties for the budget. Ma'am, your comment on that? For what reasons, if I may know? Not good enough for? What reasons, ma'am? If you would like to repeat their words. They have said, ma'am, most of the political I'm parties. saying, if you could please repeat their words and say, not good enough, for what reasons per se? They said nothing for the, they said nothing much for the middle class. What? Most of the, yeah, this is what those parties. Ma'am, do you believe India will remain a bright spot, ma'am? Please do. Agle mein kya? Next question, please. Ma'am, my name is Mukesh and I work for Newsrise. Just wanted to know, is there a component of green bonds in the... does it contain green bonds also? I mean, what would be the component of green bonds, sovereign green bonds? Repeat your question, please. You interrupted me. So basically, in this overall gross borrowing that we have for the year, what component of that would be in form of green bonds? See, for the current year of $2 billion, one installment has already been done 1 week back, another one will be done a week later. So for the next, and the monies which we are going to raise now through these bonds, $2 billion, will be used for the projects which have been identified. And if those projects require in the pipeline that they require more money, then we will raise money through the green bonds, but that will be part of the overall borrowings which have been suggested. Pardon? There is no target for green bonds for next year. It is something which will evolve as the year goes on. Ma'am, this is Primangshu from Anandavajar Patrika. You have said that your capital expenditure has reached 10 lakh crore, but the interest payment expenditure that has also reached 10 lakh crore. And the interest payment burden, it is almost 40% of the revenue received. So do you think it is a matter of concern for? It is always desirable for a government to have its interest payments as low as possible. But you are aware of the reasons for which government had to borrow a lot over the last 3 years. And all that I can say is the borrowings have been used very constructively towards growth-inducing investments and have not been frittered away on unproductive expenditure. Therefore, if the economy keeps growing at the rate that it has started to grow at now, then this is unlikely to be an unsustainable debt burden. We are quite confident that the interest burden will gradually come down as the GDP keeps growing. And to sustain that growth, the quality of expenditure, the quality of government expenditure is increasing. The revenue deficit is falling even faster than the fiscal deficit. So we are actually seeing an improvement in the quality of public expenditure, which will enable us to sustain this higher interest burden, which is a result of history, 2 years of COVID, where the entire globe has seen an increase in interest burden in all governments all over the world. Good afternoon, ma'am. This is Karishma here from Business Today Television. Congratulations to you and everybody for yet another successful budget. Ma'am, you did talk about simplification of the tax regime. So my question is on the capital gains tax regime that was also expected. It was not a part of the budget announcement, but it's expected that a simplification could be done in the coming months. Is that something on the cards? And also, ma'am, secondly, no big bang announcements on cryptocurrency in this budget. What is the kind of update with the consultation paper that had to be submitted also to the FSDC? For your question, first question, I have no answer because it's your expectation you kept about it for the last few months and then you want me to answer on that? Oh, have they been? They've not told me about it. No. To say now. That's all right, but even then there's nothing to say now.
मैम मैं आलोक CNBC आवाज़ से हूँ सर। मैम मेरा सवाल ये है कि जो TDS को लेकर क्लैरिफिकेशन आई हैं और उसमें ख़ास तौर से जो 10,000 का जो थ्रेशोल्ड लिमिट है कई सारी चीज़ों पर ख़त्म कर दिया गया है, ख़ास तौर से ऑनलाइन गेमिंग को लेकर। इसके पीछे क्या रीज़न है? ऑनलाइन गेमिंग को लेकर अभी भी क्या सरकार काफ़ी कॉन्शियस है या ऐसा लग रहा है कि अभी भी टैक्स लीकेज है वहाँ से, या बाकी चीज़ों पर भी जो ख़त्म किया गया है ये TDS के लिए जो 10,000 का एग्जाम्पशन, उसके पीछे क्या रीज़न है? देखिए TDS जो ऑनलाइन गेमिंग पे है अभी प्रत्येक विनिंग के ऊपर में था, लेकिन जो ऑनलाइन गेम्स हैं वो कई सारे गेम्स मिला करके एक सेशन बनता है। एक गेम कोई नहीं खेलता है, कई सारे गेम्स जो हैं एक साथ खेलते हैं। तो इसलिए जो TDS अब लागू होगा वो समस्त गेम्स पे सामूहिक रूप से जब नेट जो विनिंग होगा, जो वो अपने पैसा जो उनका जो एक अकाउंट में से वो निकालेगा, तभी उसके ऊपर में देखा जाएगा कि कितना उसने प्रॉफिट कमाया है, कितना उसका विनिंग हुआ है। उसके ऊपर में टैक्स जो है लगेगा और उसी के ऊपर में TDS भी लगेगा। और यदि वो 10,000 रुपये से अधिक है तो TDS पहले लगता था, अब वो 10,000 की लिमिट हमने हटा दी। तो लिमिट तो हटा दिया है, लेकिन ग्रॉस पे लगेगा और नेट पे लगेगा और प्रत्येक विनिंग के ऊपर में नहीं लगेगा। ये हमने बदलाव किया है। So 2 changes have been made. One is that the taxation will be on the net winnings, because in online games generally you play a series of games over days. You don't play it, just one game and, like, you would be doing, say, race horsing would be, maybe once in a while. But this is over a period of time. So whatever are the net winnings, when you take that money from your account that you have made with the online gaming platform, the tax will be on that. So this is one change. The other change is that the TDS previously was on each winning, irrespective of the amount, on, 10,000 and more. If the winning is 10,000 and more, so some of the online gaming companies were keeping winnings lower than 10,000, say 9,999. So that we have removed. So there is no now threshold on TDS. That is the second change. Hi, ma'am. This is Priyashmita from Informist Media. Ma'am, I wanted to know that there has been an upward revision in the small savings estimates for FY23. However, data suggests that there is a shortfall. So how do you plan to achieve it? Yeah, it's a good question, and I mean, it shows good awareness of our numbers. I'm happy to see people read our, deep statements with so much attention. It is a good question. What I can say is the market borrowing number is completely firm. That will not change. The remaining numbers have a little bit of fluidity, whether it is small savings, state government provident fund is a very fluid number. See, because if state governments change that number, it affects the overall balance of our funding plans. The market borrowing number is firm. The small savings number is, there is traditionally a seasonality where a lot of small savings comes in the last quarter because people plan their taxes in the month of February and March. So there is usually an upsurge. Will it reach this number or not? You see, these numbers are subject to a number of assumptions. But we are confident that in aggregate, the other sources except market borrowing, the aggregate of them will be close to what we have estimated. And therefore, I don't think this will have any impact on markets. Now, in terms of small savings, again, the date from which these new schemes come into operation is yet to be decided. So there are a number of factors on which the small savings number could fluctuate. But I repeat, it will not affect the market borrowing numbers. No, she's talking about FY22, 23 is my impression. Current financial year. Yes, I'm also talking about that. Again, the next year, 14 months before the end of the year, I cannot be firm on next year's numbers, but they are as firm as we can make them 14 months ahead of time. Well, I mean, if there is a shortfall somewhere, there is an increase somewhere else. We have shown you all the numbers as to how we meet
the deficit of this year, how is it going to be funded? I have the statement, you have the statement too, since you've obviously read it, so I don't need to tell you. So that's how we will fund it. So this is a big budget in which something goes up, something goes down. Revenues have gone up, expenditures have gone up, some things have gone down. But in aggregate, as I said, we are confident of being within our market borrowing numbers. We are confident that the deficit that we have projected for the revised estimate is reasonable and will not be exceeded significantly. It will not be exceeded significantly. Beyond that, I cannot give you a pinpoint. You cannot land a Boeing 747 on a helipad. So, it's a huge thing. There will be minor, fluctuations here and there. But at a macro level, our numbers are good. I'm confident about us. मैम नमस्कार, मेरा नाम महावीर सिंह है, फ्रीलांसिंग करता हूँ। दो छोटे से स्पष्टीकरण चाहिए थे। एक तो 7 लाख रुपए तक की आय जो आपने कर मुक्त की है, वो दोनों उसमें है, पुराना और नया, या सिर्फ नए में है? ओके। और एक आपने घोषणा की कि जो गाड़ियों के स्क्रैप के लिए सरकार कोई सपोर्ट कर रही है, उसके पीछे क्या मंशा है सरकार की? क्यों इस तरह के उसको बढ़ावा दे रही? मंशा यही है कि एनवायरनमेंट के लिए पुराना गाड़ी को हटाना चाहिए, मगर वैसे बिना इंसेंटिव हटाना भी मुश्किल है, क्योंकि लोगों को लगेगा कि हटाने में से मुझे क्या फायदा है। सो इंसेंटिवाइज करना उसके लिए। Scrapping of vehicles and replacement of vehicles as well. What is the kind of outlay that will be there and that we'll see in the coming fiscal? See, there are two parts to it. For the central government, all central government vehicles that are beyond the 15-year age limit will be scrapped. Those of them that need to be replaced will be replaced. This money is provided for in different departmental budgets because it is not a macro number that is planned centrally. The number is significant. It exceeds 1,000 crores. What it exactly is, I also don't know. I'd have to add it up from several books. For state governments, we are making this part of the scheme for state capital investment. If they need to replace old state government vehicles, then that support will come from this scheme. And they have to meet certain conditions on meeting the national scrapping policy. The aim is to get rid of polluting old vehicles in the government sector. नमस्कार मैम, प्रमोद शर्मा। मैम, प्रधानमंत्री जी का नारा है कि लोकल फॉर वोकल, लेकिन जो ऑनलाइन प्लेटफार्म है, फ्लिपकार्ट और अमेजन, इनके चलते जो छोटे छोटे दुकानदार हैं, उनका कारोबार प्रभावित हो रहा है। तो सरकार की कोई ऐसी योजना है कि फ्लिपकार्ट और अमेजन से भी सरकार को कुछ नहीं मिल रहा है टैक्स जो मिलना चाहिए, तो ऐसा कुछ इन पे कुछ लगाने का जो लोकल फॉर लोकल के लिए तो जेम में पोर्टल में एमएसएमई को स्थान मिल रहे हैं। वो उनके अपने प्रोडक्ट्स को उनके द्वारा मार्केटिंग आउटरीच करने के लिए गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस प्रोविजन दे रहा है। सो उनके लिए पॉजिटिव एक्शन है उधर। Precise numbers I don't have at this point of time, but the scheme is that if there's an arbitration award which has already happened, either of the party, either a government department or a government undertaking has challenged it, or the contractor has challenged it, and that arbitration award is being contested in any court, then depending upon the level of the dispute, a settlement can be reached between the two parties so as to reduce the amount of litigation which will be there. Yeah, it will be a voluntary, see, it is voluntary. Any dispute can be settled out of court by both parties. Traditionally,
there are difficulties for government to take a discretionary decision on settling a dispute. So this will be a standardized set of terms depending on the nature of dispute and the level at which the dispute has been settled, or has been where there's an arbitration award, where there's a court award, where there's a Supreme Court award. There are different levels at which there is certainty or uncertainty. We will be coming out with a draft scheme which will be put out for consultation very shortly from the Department of Expenditure. So, no, it is only for domestic. Only domestic disputes. It will not cover international arbitrations or international cases. Definitely not. Thank you. Want both of them to answer for each economic survey from his school of thought and us from our school of thought? We are not going to be talking about comparing the two and giving justification for one. They come from their school of thought and we do it ours, right? I understood the question, but you're trying to link the two which are not so related. That is economic survey, yeah? That is exactly what I mean. The dated security figure will not change regardless of changes in the other figures. That's your second question. On the first question of 10.5, remember there's a difference between an estimate in an economic survey, which is given for general guidance, and a budget which has to be used to fund expenditure. So we have to have numbers which are at a higher level of probability of being exceeded than the economic survey. So therefore, our number of 10.5 could come from any combination of inflation and real growth. We are expecting nominal growth to be at least 10.5%. That's the basis on which the budget is presented. Now that can come from multiple combinations. I cannot tell you that it will be 6 and 4.5, or will it be 6.5 and 4, or will it be 7 and 3.5, or will it be 5.5? I mean, these are all, we are reasonably confident that we will exceed 10.5% nominal growth for the purposes of estimating our revenues, which is why we use that estimate. Whatever is stated in the budget speech, it is there, it is 11.8, it has been stated in the budget speech, and I know you have read this statement, so it is there, 11.8. Good afternoon, ma'am. I am Nikun Johuri from Reuters. You said that there'll be changes to improve governance for banks. So will there also be changes to the Bank Nationalization Act that will enable you to privatize 2 banks that you'd announced earlier? And also, ma'am, is there a concern for the government? Our markets have fallen last few days because of decline in Adani Group stocks. So is that a concern for the government, because retail investors have also been impacted significantly because of this? I had answered that question earlier, that the proposed amendments have nothing to do with disinvestment or privatization of the bank. That is a separate chapter. As far as the second question is concerned, we in the government don't comment upon the issues relating with a particular company.
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इस पे बात हो रही है, यूनिवर्सिटी सेटअप होने की बात हो रही है, सेबी यूनिवर्सिटी सेटअप करेगा, बहुत सारी बातें हो रही है, लेकिन ये बात कहां तक होएगी? इसके पहले भी यूनिवर्सिटी सेटअप करने की बात इसमें 2-3 टेकअवेज थे, एक मिनट बताना जरूरी है। एक तो मैं रजत आ रहा हूं। जैसी आज सेबी एक इंस्टीट्यूट सेटअप करेगी जिसमें डिग्रियां दी जाएगी और लोगों को कैपेसिटी बिल्डिंग करेगी, ऐसे ही 3 साल पहले डिफेंस के लिए एक यूनिवर्सिटी सेटअप हुई थी, 39 करोड़ रुपए सैंक्शन हो गए थे, गुड़गांव में सिर्फ जमीन ली गई, अभी तक वहां जगह तक। अच्छा देखिए, 2-3 चीजें, एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो है 10 लाख करोड़, वो 33% ज्यादा। इसके अलावा पीएम आवास योजना 66% ज्यादा, 79,000 करोड़, और रेलवे के लिए 2.5 लाख करोड़, जो 9 गुना ज्यादा है 2013-14 से। अब एक एक करके आप सब, एक मिनट पहले सर, हाँ प्लस भाई हमारे आकाश भाई बहुत उत्साहित है। देखिए सबसे बड़ी बात है कि बजट में पहले 3 उन्होंने कहा है कि 3 हमारे लक्ष्य हैं, और उसके 7 उन्होंने बेस बताए हैं, उसके आधार पर पूरा बजट है। 3 क्या है? तो नागरिकों के पास, आम नागरिक तक पहुंचना, जिसमें युवाओं को सबसे ज्यादा हमको प्रमुखता देनी है। दूसरा उन्होंने कहा है कि हमारा जो लक्ष्य है वो रोजगार सृजन है, मैक्सिमम से मैक्सिमम। और थर्ड जो है वो जो हमारे यहाँ जो आर्थिक स्थिरता आई है उसको और कंसोलिडेट करना है। उसके बाद उन्होंने कहा कि हमने 7 आधार बनाए हैं बजट का। तो जब 7 आधार आप देखेंगे, 7 आधार है कि एक समावेशी विकास है, दूसरा है वंचितों को वरीयता देना है, जो वंचित रह गए हैं, तीसरा है बुनियादी ढांचा और निवेश, इन दोनों को बढ़ावा देना है, क्षमता विस्तार करना है, देश में जो पॉसिबिलिटी है लोगों के अंदर उसको करना है, फिर हरित विकास है, उसके लिए बड़ी घोषणाएं हैं, युवा शक्ति और वित्तीय क्षेत्र। मैं 2-4 पॉइंट इसमें बताना चाह रहा हूं जिस पर शायद जैसे आपने एक तो हाउसिंग का बता दिया, 70 की हाउसिंग का बढ़ाने का मतलब 66% ज्यादा। 70 हाउसिंग बढ़ाने का मतलब होता है कि वो क्षेत्र, वो देश के हर क्षेत्र का विकास हाउसिंग से जुड़ा होता है। उसमें ईंट भी बनेगा, उसमें सीमेंट भी बढ़ेगा, उसमें स्टील भी बढ़ेगा। किया गया है 48,000 करोड़ से 79,000 करोड़, 66% ज्यादा। हाँ वही ना, 79,000। लेकिन जो विशेष बातें हैं ना उस पर जरा ध्यान देने की जरूरत है। देखिए पहली बार जो है, जैसे मिलेट्स को बढ़ावा देने के लिए इस देश में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स की स्थापना होगी, जहां वो शोध करके बढ़ावा दिया जाएगा, उसके लिए स्पेशल फंड हुआ है। दूसरा, जो मछुआरा वर्ग है, जिसके बारे में कहा जाता था कि मछुआरों के बारे में बात बहुत होती है, राहुल गांधी भी जाके भाषण दिया है, काम कोई नहीं करता है, ये पहली बार बजट में स्पेशल पैकेज, स्पेशल स्किल डेवलपमेंट, उसकी बात है। जो तीसरी बात इसमें है कि कोऑपरेटिव को बढ़ावा देने के लिए कोऑपरेटिव का पूरे देश का एक डाटाबेस तैयार करके और नए सिरे से कोऑपरेटिव मूवमेंट खड़ा। 1-2 लाइन और बोल देते हैं, आप लोग बोलते रहिएगा, फिर हो जाएगा। इसके बाद जो इसमें है, हाँ इसमें यह है कि आपको ग्रीन ग्रोथ के लिए एग्री क्रेडिट सोसाइटी 63,000 एग्री क्रेडिट सोसाइटी बनाई जा रही है, वही सहकारी की दृष्टि से। और भी बात आएंगे तो बताऊंगा। ऐसे कई इसमें नहीं, एक लाइन और है। देश के सर अगली बार के लिए बचा लीजिए थोड़ा सा। जो आर्टिजन है, नहीं आर्टिजन वगैरह के सम्मान के लिए राष्ट्रीय विश्वकर्मा सम्मान योजना की घोषणा हुई। तो ये सारे महत्वपूर्ण घोषणाएं हैं कि वंचितों तक से लेकर समावेशी विकास तक, महिलाओं के लिए स्पेशल भी है। पीएम विकास योजना जिसको नाम दिया गया है विश्वकर्मा कौशल सम्मान, विश्वकर्मा कौशल सम्मान। बताइए रजत, कैसा लगा बजट? अमन जी, मुझे लगता है जो सबसे बड़ा टेक अवे है बजट का, जिसकी वजह से मार्केट भी रिएक्ट करी, वो केपेक्स का ही है। 10 लाख करोड़ सरकार ने ये मन बना लिया कि अभी इस चुनावी साल में बहुत ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर से उम्मीद नहीं है, जितनी उम्मीद उनको फ्रंट से आके ही लीड करना पड़ेगा। इसीलिए सरकार दबा के स्पेंडिंग करेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर में, प्रोजेक्ट्स में स्पेंडिंग होगी। इसीलिए इन्होंने पीएम आवास योजना में भी अपने आउटले को बढ़ाया है। हर तरफ से कैपिटल एक्सपेंडिचर सरकार ही अपने कंधों पे उठाएगी। प्राइवेट सेक्टर से उम्मीद कमी है कि अभी इमीडिएट रिकवरी होगी। मुझे लगता है उसको इलेक्शन के बाद देखा जाएगा। इस साल जो बचे हुए दिन है मोदी सरकार के इस टेन्योर में, उसमें सरकार दबा के स्पेंडिंग करने वाली है। ये एक पॉजिटिव इसके वर्चुअस साइकिल के इफेक्ट्स होंगे। इसीलिए सेंसेक्स और बाकी, क्योंकि स्क्रीन पर जो लगातार टैक्स चल रहा है, एक बार उसका मैं जल्दी से एक बार बता देता हूं। मैं 1 मिनट सर आ रहा हूं आपके पास। जो स्क्रीन पर आप लगातार टैक्स देख रहे हैं, 1 मिनट, मैं पहले वो समझा देता हूं क्या है। देखिए अभी सबसे ज्यादा लोगों का इंटरेस्ट है टैक्स को लेकर। भाई टैक्स में क्या हुआ है? टैक्स में एक तो ये हो गया है कि अगर आप 7 लाख रुपए तक कमाते हैं तो आपको 1 रुपया भी टैक्स देने की अब जरूरत नहीं है। अगर आप 7 लाख तक कमाते हैं तो पहले आप दे रहे थे 54, देखिए नीचे इस वक्त टैक्स स्लैब चल रहे हैं। अब चेंज जो हुआ, पहले अगर आप 7 लाख कमा रहे थे आपको 7800 रुपए टैक्स देना पड़ रहा था, अब वो 0 हो गया। पहले 7 लाख कमा रहे थे, आपको टैक्स देना जो पड़ रहा था अब वो 0 हो गया। 8 लाख कमा रहे थे तो पहले 46,800 रुपए टैक्स देना पड़ रहा था, अब आपको देना होगा 36,400, क्योंकि वो 2.5 का 3 वाले स्लैब में आप पहुंच जाएंगे, मतलब 10,400 रुपए के आसपास का फायदा। 9 लाख रुपए कमा रहे थे, पहले था 62,400 का टैक्स,
अब हो गया 46,800 रुपए का टैक्स। इसमें भी जो 9 लाख रुपए कमा रहे हैं उसको भी फायदा हुआ है, उसको फायदा हो गया 15,600 रुपए का फायदा सालाना, मतलब 1500, मतलब ये आप समझिए 62,400 का 46 के आसपास पहुंच गया, तो 15,000 का फायदा। 10 लाख जो कमा रहे थे पहले 78,000 पे टैक्स दे रहे थे, 78,000 टैक्स दे रहे थे, अब देना पड़ेगा 57,200। 57,200 मतलब बच गए कितने? 20,800। जो 10 लाख रुपए कमा रहे हैं उनके बचेंगे 20,800। 20,800 मतलब महीने के 1,500-1,600 के आसपास आपके बच जाएंगे। ये सालाना के हिसाब से मैं बता रहा हूं। 10 लाख पहले 78,000 देना पड़ रहा था, अब 6 लाख पहले 7800 टैक्स था, अब 0 है भाई। 6 और 7 तक का तो वैसे ही 0 हो चुका है, और ये नया टैक्स स्लैब जो है। और एक सबसे बड़ी चीज जो है, सबसे बड़ा फायदा उनको है जो 5 से 7 के बीच में थे, मतलब जो 5 से 7 के बीच में थे, जो महीने के 7 लाख यानी कि 55-60 हजार के आसपास कमाते हैं, उनको 1 रुपया भी टैक्स देने की जरूरत नहीं होगी। जल्दी से आकाश जी, क्योंकि मुझे उधर जाना है। देखिए, सबसे पहले एक चीज बता दूं, 23वां साल है मेरा बजट को एनालाइज करते हुए। पिछले 23 साल का बेस्ट बजट है ये। 100 में से 95 नंबर मैं इस बजट को देता हूं। क्यों? 10 में से दीजिए ना, मैं सबके ले लूंगा। फिर 10 में से कितने? 10 में से 9.5 नंबर देता हूं। सबसे पहली बात, जीडीपी ग्रोथ ये बजट जो है 0.8% बढ़ा देगा। क्यों? सब लोग कह रहे हैं कि कैपेक्स सिर्फ सरकार करेगी। जी नहीं, कैपेक्स जो सरकार करेगी तो प्राइवेट सेक्टर इमीडिएटली फॉलो करेगा। सरकार का कैपेक्स ग्रोथ कभी भी आइसोलेशन में नहीं होता, चाहे आप अमेरिका देख लीजिए, यूरोप देख लीजिए, तो प्राइवेट सेक्टर की तरफ से भी कैपेक्स इनफ्लो आएगा। वो पूरा का पूरा सिस्टम होता है, तो वो जीडीपी ग्रोथ के अंदर बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन देगा। तो इकोनॉमी के अंदर जो 6.8% का टारगेट इस सरकार ने रखा है वो अचीव हो जाएगा। इसलिए 10 में से 9.5 नंबर दे रहा हूं। दूसरी बात, 9.5 आगे बढ़ते हैं ना सर। एक मिनट, छोटा सर, आप भी एक बार नंबर दे दीजिए, मैं नंबर भी ले लेता हूं। क्या आप कितने नंबर देंगे 10 में से? अब नंबर में आपने जल्दीबाजी कर ली, अभी डिफेंस का हम लोगों को नहीं अंदाजा है कि क्या है, कई चीजों का अभी डिसइन्वेस्टमेंट। अब जितना देखा उसके हिसाब से 10 में से हिसाब से मैं इस नाते इसको इन्हीं के हिसाब से कम 9.5 इसलिए दूंगा। नहीं, उसका कारण मैं बता रहा हूं कि जो ये घोषणा है कि भारत की अपनी पहचान को पुनर्स्थापित करते हुए विश्व की शक्ति बनाना, उस दिशा में ये बजट जा रही है। ठीक है दत्ता जी, आप समझाएंगे भाई। मैं इस बजट को 9.5% के आसपास दूंगा। 10 में से 9.5 नंबर। 10 में से 9.5%। आधा क्यों काट रहे हैं? आधा किस लिए काटा है? वो डिफेंस और बाकी चीजें हैं, वो मतलब कि क्वालिटेटिव है, उस पे भी बाद में ध्यान दिया जा सकता है। मैं मानता हूं कि ये दूरगामी बजट है और ये कंप्लीटली आत्मनिर्भर भारत और उन्नत भारत पे आधारित है। अब बात आती है जो टैक्स स्लैब पे जिस हिसाब से राहत दी गई है, 7 लाख तक का जो एक आपका 0 वो है स्लैब है, कहीं ना कहीं पे जब आपके पास ज्यादा पैसा होगा तो आप निवेश भी करेंगे, आप उसके साथ साथ खर्चा भी करेंगे। जब आप खर्चा करेंगे मार्केट पे, आपकी मार्केट में डिमांड बढ़ेगी, डिमांड जब बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगा, सप्लाई जब बढ़ेगा तो नेचुरल है कि जीडीपी ग्रोथ रेट पे, क्योंकि प्रोडक्टिविटी लेवल और प्रोडक्शन बढ़ेगा तो जीडीपी ग्रोथ रेट पे इसका सीधा असर। उम्मीद की जा रही थी 2.5 से 5 हो जाएगा, मतलब वो सब चल रहा था ना सर। वो पहले जब हम प्री बजट एनालिसिस कर रहे थे तो वो वैसे देखा जाए तो 2.5 से 3 ही हुआ, सिर्फ 50,000। ATC भी कुछ नहीं बढ़ा। नहीं, 50,000 पर आप ये जो 50,000 का जो स्कीम है, जो मिडिल क्लास के 70% लोग हैं, और हमारे देश में मिडिल क्लास सबसे ज्यादा परसेंटेज है, उस परसेंटेज में छोटे जो पुअर सेक्शन है और मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास है, उनके पास जब पूंजी आएगा तो नेचुरल है कि वो तो हिस्सेदार बनेंगे ना इकोनॉमी का। इकोनॉमी का जब 10 में से 9.5 आपने दिए रजत, आप कुछ नंबर देंगे 10 में से कितने? 6, 7, 8? नहीं, आपके हिसाब से 10 में 10 ही लीजिए ना। 10 में से 10 ले लेते हैं, ठीक है। कमी कुछ नहीं है, क्योंकि कैपेक्स 33% शायद सबसे बड़ा टेक अवे। पहले नंबर दीजिए ना सर। मैंने नहीं देखा इस तरह का चीट, इस तरह का क्रिमिनल माइंड पूरे जेल स्टाफ को ब्राइब कर देगा। मैं सोच भी नहीं सकता था गवर्नमेंट फंक्शनरी को इंपर्सनेट करता था, आवाजें बदलता था। टारगेट भी बहुत पावरफुल, धनवान लोगों को करता है। ये एक ही चीज से रुक सकता है, अगर आप इसकी जीभ काटें। न्यूज चैनलों के इतिहास में पहली बार न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग 3rd February 9 PM। 10 में से 10 और मैं बताता हूँ क्यों। देखिए, ऐसा अभूतपूर्व बजट मैंने नहीं देखा है। उसमें कुछ रीजन है। पहला मैं 3 बताऊंगा। पहला रीजन ये है कि ये बजट सबको छुआ है, हर पक्ष को छुआ है। आप गरीब की बात करिए, गरीब को सब कुछ सरकार खुद विभिन्न स्कीमों के तहत दे रही है। आप मिडिल क्लास की बात करिए, लगभग 7 लाख तक आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। आप अमीर की बात करिए,
बोलने दीजिए ना। आप अमीर के बात करिए, 42% पहले हाईएस्ट टैक्स रेट था जो कि 39% हुआ। तो आप गरीबों के बारे में, मिडिल क्लास के और अमीरों के बारे में अब सरकार ने सोचा है, पहली बार ऐसा हुआ है, पहली बात थी। दूसरी बात यह है कि पहली बार टूरिज्म पे इतना फोकस किया गया है और टूरिज्म हमारे देश में इतनी संभावनाएं हैं, हम कितने सिंगापुर और कितने जो है दुबई यहाँ बन सकते हैं अगर आप टूरिज्म पे ठीक से फोकस कर लें। जो 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी है वो कम से कम $1 ट्रिलियन तो आपके टूरिज्म से कुछ सालों में आ सकती है। मतलब सर आपने 10 में से 10 दिया, आपको कोई कमी नहीं नजर आई, कुछ भी बेहतर की उम्मीद नहीं थी, मतलब परफेक्ट था। परफेक्ट है। और तीसरी बात यह है कि जो कैपेक्स पर इतना ज्यादा एक्सपेंस किया गया है वो एक जो है 10.5 लाख करोड़ के आसपास हो गया है। तो अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस कर रहे हो, आप टूरिज्म के ऊपर फोकस करने जा रहे हो, आप अमीर गरीब और मिडिल क्लास सबके ऊपर आपने फोकस किया है। इससे बेहतर तो महिलाओं के बारे में बात करें, किसानों के बारे में बात करें। अब 40 सेकंड रखेंगे, 40 सेकंड। हाँ जी, सेंसेक्स 1100 पॉइंट अप है, तो शेयर मार्केट ने क्लियरली थम्स अप दिया है। शेयर मार्केट जो इकोनॉमी का एक इंडिकेटर है, क्लियरली थम्स अप दे रहा है, क्लियरली सैल्यूट दे रहा है। आकाश उत्साहित है, वैसे ही देश के विकास भी उत्साह में। अशोक जी स्तब्ध तो नहीं है ना सर? ये बात सुन के मैं स्तब्ध हूँ कि शेयर मार्केट इंडिकेटर है। हमारे यहाँ शेयर मार्केट कई बार सिर्फ फॉरेन इन्वेस्टर्स की वजह से ऊपर चला है। मैं ये मानता नहीं। 81 करोड़ लोग आज भीख मांग के खाना खा रहे हैं और उसके बाद आप शेयर मार्केट का 1100 का इंडेक्स बताते हो कि देश का इंडेक्स है। जब बाजार डूब जाता है तो कहते हैं ना अर्थव्यवस्था डूब गई। नहीं, अर्थव्यवस्था बिल्कुल नहीं डूबती, कोई फर्क नहीं पड़ता। बाजार आप नहीं कहते सर, मतलब सट्टोरियों को फर्क पड़ता है और ये सट्टा खेलने वालों का हो गया होगा। ये बजट ठीक है। एक इंपॉर्टेंट बात, इनकम, एक मिनट आकाश जी, एक मिनट का इंडिकेटर है। ऐसे कैसे दुनिया मानती है कि स्टॉक मार्केट इकोनॉमी का इंडिकेटर है। स्टॉक मार्केट कब बढ़ती है? जब इकोनॉमी जो है तरक्की करती है, तेजी में आती है, कंपनियों को मुनाफे बढ़ते हैं। स्टॉक मार्केट में आज 2 लाख रुपए कमाने वाला भी जो है पैसा लगाता है। स्टॉक मार्केट में दुनिया भर के इन्वेस्टर्स लगा रहे हैं। और स्टॉक मार्केट में नंबर दे रहे थे नंबर अभी तक 10 में से 9.5, 10 में से 10 सर। एक इंपॉर्टेंट बात, एक इंपॉर्टेंट बात जो रह गई अभी सब ध्यान में लानी चाहिए कि एमएसएमई को लेकर एक बदलाव किया गया है इनकम टैक्स के माध्यम से कि जो मेरा खर्चा एमएसएमई को देना है किसी ने, वो तभी अलाउ होगा पेमेंट बेसिस पे। यानी कि मैं एक बिजनेसमैन हूं, मैं एक कंपनी हूं, मैंने एमएसएमई से कुछ माल खरीदा और उसको मुझे पेमेंट करनी है, वो पेमेंट तभी अलाउ होगी इनकम टैक्स में अगर आप पेमेंट हो जाएगी, क्रेडिट पे नहीं होगा अलाउ। यानी कि जो एमएसएमई की पेमेंट डूबती थी उसको बचाने का तरीका ढूंढा गया। अब नंबर दे दीजिए सर, 10 में से कितने दे रहा हूं आपको। नंबर दीजिए आपके हिसाब से, मतलब सारे चल रहे हैं 10 में से 9.5, 10 में। मेरी बात तो सुनिए। देखिए सबसे गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट। गुड। हाँ, एक मिनट मेरी बात सुनिए। नहीं आप सुनिए तो सही, आप अपने आप गुड और एक्सीलेंट करेंगे। मैं पूछ रहा हूँ सर। खास बात, चलो एंड में सबसे खास बात सुनिए इसके बजट की कि मैंने तो 3 ऑप्शन दिए वानखेड़ी जी, गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट। तो आपने कहा वेरी गुड क्यों नहीं? नहीं अब उन्होंने गुड तो पूछना पड़ेगा ना, कमी कहाँ रह गई? कमी नहीं, कमी तो अभी ऐसा है किसी को नहीं। अच्छा चलिए, बैड, गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट। सवाल ये, एक मिनट, मैं तो अभी भी कह रहा हूँ, एक सेकंड। अच्छा नहीं, उनका भी भाई जरूरी यार है। मुझे बात बताइए, आपको जो चाहिए वो बता देते, कभी हमारा भी तो सुनो यार। कभी हम क्या कह रहे थे? सर आप ही का सुन रहे हैं सारे वैसे, जब से आप बैठे। जब तक एनेक्स्चर नहीं सर, मेरी अभी तक तो आपने बिल्कुल आपको नेता विपक्ष का, सदन का नेता विपक्ष बना दिया। अरे मुझे कुछ भी, हम तो हर सरकार में विपक्ष के नेता होते हैं। सवाल तो सरकार पे उठाएंगे, सरकार की बढ़ोतरी थोड़ी करेंगे। सवाल ये है कि जब तक एनेक्स्चर नहीं आते तब तक पूरे डिटेल नहीं आते। डिफेंस का मामला है, अभी टोटल ब्याज और इस पे देने के लिए कितना पैसा है, रुपया कितना आता है, कितना खर्चा होता है, ये सारा चीजें सिर्फ इस पे आंकड़ों पे नहीं। और दूसरी बात, मैं फिर से कह रहा हूं, नीति और नियत में नहीं, मैं इंप्लीमेंटेशन पे। मैंने आपको सिर्फ एक यूनिवर्सिटी का उदाहरण दिया था, एक यूनिवर्सिटी का। चाहे तो मैं आपको 50 उदाहरण दे सकता हूं कि पिछले बजट में क्या अनाउंस हुआ और वो नहीं हुआ। इसलिए ये बजट जो अनाउंस किया इसको इंप्लीमेंट करें, उसके बाद मैं बताऊंगा। ठीक सर, अब आपका टेक सर, अब आपका टेक। हाँ, एक मिनट, एक करके। हाँ बोलिए। अमन भाई, अगर आप नंबर की बात करते हैं, इसको मैं 7 नंबर दूंगा। 7 नंबर देने का रीजन है, दत्ता, एक मिनट एसके दत्ता जी, 1 मिनट। 7 नंबर इसलिए देता हूं, देखिए आप पिछली बार आपने लाया था कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी आएगी, उसके बाद अब मैन्युफैक्चरिंग बहुत इंपॉर्टेंट हब सेक्टर होता है जिसकी वजह से इकोनॉमी बढ़ती है, घटती है और उससे रोजगारी बढ़ती है। 10 में से 7, 10 में 7 इसलिए दे रहा हूं। देखिए जीवीए बोलते हैं हम, जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग नहीं बोल रहे, जीवीए बोल रहा हूं, जो 14% हो गया है। देखिए मैन्युफैक्चरिंग आपकी अगर स्ट्रांग नहीं होगी तो आपके रोजगार नहीं होंगे, प्रोडक्शन नहीं होगा, एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेगा। तो जीवीए अगर आप देखेंगे मैन्युफैक्चरिंग का 17 से 14% हो गया, उस पर कोई ध्यान नहीं है। अब जो स्लैब जो 50,000 रुपए का बढ़ा है, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला आम आदमी को। तो लोभ लुभावने वाला तो देखने में ओवरऑल बड़ा अच्छा लग रहा है। और 5 से 7 वाला देखिए
कुछ सेगमेंट को आप कैटर करते हो, अच्छी बात है कि आप युवकों को कर रहे हो, लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि लॉन्ग टर्म पॉलिसी क्या है। आप पिछले 8 साल से सरकार में हो, लेकिन आपने लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं बनाई है। अभी आपके न्यू एजुकेशन पॉलिसी नहीं ला पाए, जिसकी वजह से रोजगार बढ़ने की संभावना है। तो बहुत सी चीजें होती हैं, मैन्युफैक्चरिंग देख लीजिए, उसमें है। आप किसानों ये राहत अच्छी है, थोड़ी और की उम्मीद थी, थोड़ी और ज्यादा मिलना चाहिए, इसलिए बोले साथ दिया, मैंने बोला 70% इसलिए दिया मैंने उनको। ठीक ठीक, अच्छा चलिए, हाँ अब एक मिनट, हाँ अब क्रिटिसिज्म थोड़ा सा। हाँ देखिए अमन जी, मैं तो इसको 10 में से 1 नंबर दूंगा। उसका 2 कारण है, 2 कारण है इसके, सुन लीजिए ना, 2 कारण सुनना चाहिए। कारण सुन तो लीजिए। अरे एक मिनट देखिए, अरे भाई जब आप सुन लीजिए ना भाई, 10 में से 1। अब इसके आपके हिसाब से क्यों बात, एक सेकंड, अरे जब आपने बहुत बढ़िया 10 सेकंड में लॉजिक दिया था कि सारा बेच के पैसा कमाओ तो सरकार का डिफिसिट खत्म हो जाएगा, तो ऐसी लॉजिक इनके पास भी होगी। सुन तो लीजिए गुरुजी, क्योंकि मैं दे रहा हूँ। देखिए अच्छा 10 में से 1, मैं देखिए एक सबसे नंबर 1 चीज के, देखिए टैक्स में जो एक अच्छा एक काम करते हैं, जो 10 में से 1 दिया है, पहले बताइए 1 क्यों दिया, अच्छा क्या लगा? देखिए 1 इसलिए मैंने दिया है कि सरकार ने पूंजीगत व्यय में एक तरह से 33% की वृद्धि की है। इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेक्स को लेके, वो कैपेक्स को लेके ये उन्होंने वृद्धि की, ये आवश्यक चीज है। लेकिन जब देखिए अभी मैं टैक्सेशन पे शुरू कर रहा हूँ, थोड़ा सा समय दीजिएगा। मैं देखिए टैक्सेशन के मामले में आप जब 5 लाख तक का उसमें घोषणा की गई थी, तब भी कहा गया था बड़ा क्रांतिकारी कदम है। अगर वो 5 लाख तक के छूट का कदम वो क्रांतिकारी कदम था, तो अधिकांश टैक्स वालों ने उसको अपनाया क्यों नहीं? 10% से भी कम लोगों ने उसे अपनाया। तो इसमें जो मुख्य रूप से मैं मानता हूँ कि 2.5 से 3 हुआ है, वही एक तरह से सरकार उसमें 50,000 के आसपास आगे बढ़ी है उसमें ओवरऑल, नहीं तो उसमें कोई विशेष छूट नहीं मिली है। दूसरा चीज की देखिए, सरकार कई बड़ी घोषणाएं करती हैं, जैसे कैपेक्स को लेकर सरकार की घोषणाएं बड़ी है और स्वागत योग्य, मैं उसका स्वागत भी कर रहा हूं, इसलिए 1 नंबर दे भी रहा हूं। लेकिन एक आंकड़ा दे रहा हूं, आप उसको इंप्लीमेंट कैसे करते हैं? आप इंप्लीमेंट कैसे करते हैं? देखिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क जोड़ो योजना, पिछले साल का अगर आप देखिए अक्टूबर से लेके, अच्छा आपने जो बाकी नंबर्स काटे वो और क्या पॉइंट्स मैं कह रहा हूं कि पिछले 6 माही में देखिए अब एक सेकंड, पिछले 6 माही में अगर हम लोग देखें तो उसमें केवल और केवल जो 41% लक्ष्य पूरे किए। एक काम करते हैं, एक मिनट जो यहाँ पे सब पूछ रहे, एक तो टैक्स हो गया और दूसरा कैपेक्स में 33%, और क्या हाईलाइट्स हैं बजट की? नहीं देखिए बजट के तो जैसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर सरकार ने जोर दिया है, उसको लेके चूंकि देखिए आज हम लोगों को अगर आगे बढ़ना है, मैं कह रहा हूँ रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी। कौन सी बातें 2 के अलावा आपको अच्छी नहीं लगी? क्या पॉइंट्स हैं, क्या हाईलाइट्स हैं बजट की? नहीं मैं तो बता रहा, 2 नंबर हो गए ना, मतलब मैंने कहा 2 नंबर आपने काट लिया, आपने टैक्स का काट लिया और 1 नंबर आपने कर दिया 33% वाला। बाकी क्या हाईलाइट्स क्या है? नहीं मैं हाईलाइट ही तो बता रहा हूँ कि देखिए अगर आपकी नीति, देखिए सरकार की मुख्य नीति वो सही नहीं, प्रधानमंत्री सड़क योजना में आपने बजट आवंटित किया, आपने किया ही नहीं। बिल्कुल गलत नहीं। प्रधानमंत्री सड़क योजना से किस तरीके से जीडीपी बढ़ेगी मैं बताता हूँ। प्रधानमंत्री सड़क योजना कौन बनाएगा? अच्छा हाँ देखिए मैं कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री ग्राम जोड़ो सड़क योजना के लिए जो लक्ष्य रखा गया था, उस लक्ष्य को केवल 41% ही पूरा किया जा सका। आप अगर इम्प्लीमेंट करेंगे, चीजें को इम्प्लीमेंट करेंगे तब तो स्वागत योग्य कदम है। चलिए ठीक है, हाँ ठीक है, एक मिनट एक करके हाँ प्लीज देखिए मिडिल क्लास को, सैलरीड क्लास को राहत है, ये तो क्लियर है, लेकिन जब सब गरीबों की सब्सिडी की बात होती है, सब पूछते कहां से आएगा। टैक्स में अगर गिरावट आई है तो इसका मतलब है कि रेवेन्यू डेफिसिट होगा, तो उसकी पूर्ति कहां से होगी? ये पूरा बजट देख के पता चलेगा कि कौन से एलोकेशंस को कम किया गया है। तो जब तक एजुकेशन, हेल्थ और डिफेंस और तमाम चीजों का पता नहीं चलेगा। दूसरी बात यह है कि जो मैं कॉर्पोरेट बेल आउट्स का पॉइंट बोल रही थी, वो इसमें पूरा प्रूव होता है जब बोला गया कि काफी डीक्रिमिनलाइजेशन क्लॉजेस और लॉसेस को कैसे कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा। इस पे कई सारे उन्होंने पॉइंट्स बोले हैं, जिस पे अभी और पढ़कर पता चलेगा। तो कहीं ना कहीं डिफॉल्ट बेसिकली 39,000 कंप्लायंसेस रिड्यूस फॉर इंडस्ट्री। नहीं उन्होंने बोला था नॉट जस्ट फॉर स्टार्टअप्स बट बहुत सारे ऐसे कॉर्पोरेट्स हैं जिनके लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा और डीक्रिमिनलाइज किया जाएगा। तो इसमें भी देखने को मिलेगा कि भाई एनपीएस की कहीं ना कहीं संभावना बढ़ रही है इस तरीके से। तो डिफॉल्ट इतना स्पेस था सरकार के पास। देखिए अमन जी, अब मैं एसेंस की बात करूंगा, जनरल स्टेटमेंट बहुत हो गए। कैपेक्स 33% एनहेंसमेंट हुई है, उसमें स्पेशली 4 सेक्टर्स को पहले टच किया था। रोड मतलब नेशनल हाईवेज और रोड पे बहुत काम हो चुका है। सबसे बड़ा जो एनहेंसमेंट किया गया रेलवे के अंदर, पहले रुकिए एक मिनट, पहले एलोकेशन थी 1.4 लाख करोड़ का, पहले एलोकेशन थी 1.4 लाख करोड़ की, जो अब हुई है 2.4 लाख करोड़, मतलब विच इज मोर देन 70%।
सबसे और इंटरेस्टिंग, पहले जो फिजिकल डिफिसिट था 6.4% का, उसको टारगेट रखा 5.9, तो कैपेक्स भी बढ़ा रही है गवर्नमेंट। मिडिल, अरे यार तो होगा क्या, एक दिन अल्लाह दिन का चिराग होता है क्या? किस तरह लेमन जैसी बातें कर रहे हो आप जो भैया? तो एग्जैक्टली सवाल ये, तो वो कहाँ से आपका डेफिसिट कहाँ से पूर्ति हो रही है अगर टैक्सेस भी कम हो गए हैं? मैं दे रहा हूं जवाब, मैं दे रहा हूं। मैंने जरा सुनिए, आराम से सुनिए। किसी भी अर्थव्यवस्था को जो चार चीजें प्रभावित करती हैं, मैंने कहा कंजप्शन हो गया, गवर्नमेंट स्पेंडिंग हो गई, नेट एक्सपोर्ट हो गया और आपका इन्वेस्टमेंट हो गया। चलिए एक मिनट हिमांशु, एक मिनट टैक्स एक्सपर्ट है, उनको समझाना बहुत जरूरी। बताइए हिमांशु जी, आपसे यही उम्मीद थी, कितना फायदा कितना नुकसान है, इतना ही स्पेस था सरकार के पास? मेरी जस्ट 2 कमेंट्स है और 60 सेकेंड्स मेरे को टाइम दीजिएगा। प्लीज। मैंने सुबह को भी बोला था कि जो प्रेडिक्शन की थी कि बेसिक एग्जम्पशन लिमिट नहीं बढ़ेगी, रिबेट जो है 87A के वहां पर बढ़ेगी, तो 5 से 7 वहां हुआ है। यस। मेरे जो मैक्रो इकोनॉमिक पॉइंट है, हम टैक्स पे फोकस कर रहे हैं, टैक्स है इनकम के ऊपर में, तो इनकम बढ़ाने का क्या जरिया है? आज आप अगर इंडिया के अंदर में जो हमारा लॉजिस्टिक्स कॉस्ट है, हमारा 13 से 14% लॉजिस्टिक्स कॉस्ट है बिजनेस ऑफ डूइंग इंडिया, ग्लोबली ये एवरेज है 6%। ये जो डिफरेंस है 8%, उसके अंदर में गवर्नमेंट ने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स करी है और एक डिमांड भी है कि एक्स्ट्रा सेक्टर्स को उस पर लाया जाए। आज हम गति शक्ति के प्रोजेक्ट्स देख रहे हैं, आज हम सागरमाला, भारतमाला, नेशनल एक्सप्रेसवे, पोर्ट, एयरपोर्ट सब कुछ देख रहे हैं। ये सब इंप्लीमेंट होगा नेक्स्ट 2 साल के अंदर। गडकरी जी ने कहा है कि हम ये सब इंप्लीमेंट करेंगे और वो जो है वो कहते हैं, वो करके दिखाते हैं। तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से और हायर केपेक्स के माध्यम से ये लॉजिस्टिक्स कॉस्ट लोअर सिंगल डिजिट में आएगी 8 से 9%। और ये जो 6% और 8% का जो डिफरेंस है, ये हमारा इंडिया का ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी प्रीमियम है। और ये ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी प्रीमियम इज अ लॉन्ग टर्म चीपनेस। हम 6% तो अचीव नहीं कर पाएंगे, लेकिन 8% भी अचीव करें। आज हमने जो कोरोना काल में किया है, इंडिया ये बजट बहुत अच्छा है, मैं इस बजट को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता। मैं सरकार की नीति और नीयत पे शक नहीं करता, इम्प्लीमेंटेशन पे शक है। क्योंकि इसके पहले के बजट में जितने घोषणाएं हुई हैं, उसकी पूर्ति कहाँ हुई है? एक बार यह आया था कि इतने लाख विलेजेस को डिजिटाइज किया जाएगा, वो कुछ 1000 तक हो गए, वो प्रोग्राम फेल हो गया। स्मार्ट सिटी पे एक आया था, जब इतना बड़ा सा रेवोल्यूशन हुआ, वैसे इधर भी महिला सशक्तिकरण होगा और उनके द्वारा देश का मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज में अच्छा उन्नति हम कर पाएंगे। Ma'am, if we look at the agriculture sector, the Agriculture Accelerator Fund for agri startups in rural areas, is this part of the larger focus in terms of, there are millets, there's also the 20 lakh agri credit, or, does it stand out for youngsters to look at some opportunities that are different? And if they are interested in the agriculture sector, I mean, you've talked about 4.0 and things like that, which I know youngsters are interested in, but there may be some who, might be, not less so tech savvy. Where would they go? I mean, but actually tech savvy or not tech savvy, both have equal opportunity when you're looking at the possibilities which can emerge from agriculture, fisheries, animal husbandry and so on. Especially now, even through the cooperation we are bringing in panchayat levels, storage capacities and a big scale. So in all this, technology plays a big role, and those who don't have technology or inclination for it can still be a part of this scheme of things, where they can find logistics, for instance, storage and the type of storage, value addition from the stored grains or the products. These are areas in which technology or no technology, immense possibility lies, and there is also a gap in that the possibility is got to be fixed in those areas where there is gap. Product is there, demand is there. If you only can bridge the gap through various different ways, supply networks, logistic networks, value addition to the grains, storage of the grains, preservation of grains, aggregating the grains which are produced, immense possibility. So that is where this accelerator fund will also come in. मैम, अगर अब हम बात करें मैम आपके वित्तीय अनुशासन की, जिसको हम फिस्कल कंसोलिडेशन कहते हैं, जब पूरी दुनिया में सरकारें अपनी जनता के लिए खर्च कर रही हैं, आप वित्तीय अनुशासन दिखा रही हैं। ये आपने 6.4 का जो वायदा किया था, इस साल आपने स्टिक किया, अगली बार आप 5.9, उसके बाद ग्लाइडिंग पाथ जो आपने पहले तय किया था 2025, 26 के लिए, उस पर भी आप स्टिक कर रही हैं। ये वित्तीय अनुशासन कैसे आ रहा है मैम? मतलब मैनेजमेंट कैसे हो पा रहा है? और फिर जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स हैं
उसके लिए आपका क्या सिग्नल है इस बजट के जरिए या फिर इस फिस्कल कंसोलिडेशन के जरिए? ये कैसे हो रहा है, इसीलिए मैं बार बार ये बात बोलती हूँ कि मैनेजमेंट ऑफ योर फाइनेंस, ये नहीं है कि बजट के समय आप इस डिपार्टमेंट को इतना दिए, उनके लिए इतना दिए और उनके लिए भी दे दिया, और रेवेन्यू रेसिंग में गैप्स है उसको फिलअप नहीं करते हो। दोनों तरफ जो रेवेन्यू गैप्स है उसको फिलअप करो, बंद करो और एफिशिएंसी ले आओ। टेक्नोलॉजी को उपयोग करते हुए आज हम ट्रेल कर सकते हैं कौन नहीं पे कर रहा, जो पे करने लायक उतने बारीकी से एक इनकम और रेवेन्यू बढ़ाने के लिए इफेक्ट हो रही। दूसरी तरफ जब डिपार्टमेंट्स को खर्च करने के लिए पैसा देते हैं, क्या वो पूरे के पूरे उपयोग में आ रही है कि नहीं आ रही? एफिशिएंसी इन इफेक्टिव यूटिलाइजेशन, पैसा नीचे तक अगर नहीं पहुंचता, आपके मकसद जो है पैसा पहुंचने में डिमांड बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, वो तो आप अचीव कर नहीं पाएंगे। इसीलिए मैं मानती हूं कि फिनांस मिनिस्ट्री का काम एकदम बजट प्रेजेंटेशन के ऊपर जितने ध्यान देना है उससे 3 गुना अधिक पूरे साल में इम्प्लीमेंटेशन में, लूप होल प्लग करने में, इवेशन रोकने में, और जहां लूप होल्स को उपयोग करते हुए पैसा कहीं और जा रहा उसको रोकने में, एक्शन लेने में, और जहां बार बार गलतियां हो रही है उनको उनके ऊपर एक्शन लेके उनके संपत्ति को लेने में कोर्ट के द्वारा। हर एस्पेक्ट ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री पूरे के पूरे काम ऑन देयर टोस करना चाहिए। बैंकिंग सेक्टर में उदाहरण के लिए मैं बोल रही हूँ, कोविड के समय वो इमरजेंसी क्रेडिट गारंटी लिक्विडिटी स्कीम गवर्नमेंट अनाउंस किया, सरकार ने आपको गारंटी के तरह और गारंटी देते हुए पीछे खड़े हो रही है। अगर बैंक एफिशिएंटली इसको इम्प्लीमेंट नहीं करते, स्कीम का तो मकसद ही फेलियर हो जाता है। सो उस समय उनके ऊपर उसी हद में और उसी लेवल पर आज क्रेडिट को सबको पहुंचाने में बैंक की जिम्मेदारी है। सो मैं मानती हूँ बैंक हर एक सेक्टर फिनांस मिनिस्ट्री के अंदर डिपार्टमेंट पे डिपार्टमेंट टॉप नॉच परफॉर्मेंस करने के ही कंपटीशन हो रहा है। उसके कारण ही आज हम इतने दुनिया में चैलेंजेस रहने के बाद भी आज हम खड़े होकर के बोल सकते हैं ठीक है, हमारे रेवेन्यू बोएंसी इतना है, खर्च में कोई वेस्ट नहीं है, पूरे के पूरे यूटिलाइजेशन हो रही है, बैंक सेक्टर जो करना है वो सब रूरल तक पहुंच रही है, क्रेडिट अवेलेबल हो रही है। ऐसे करके हर एक एंगल में इकोनॉमी को ध्यान से चलाना पड़ता है। और एक कॉलरली मैम इससे जुड़ा हुआ सवाल ये कि जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट में आपने लगातार 3 सालों में बढ़ोतरी की वो कैसे हुआ, और क्या अब ये मतलब आपने सोच समझ करके ये कल्चर एक तरह से रखा कि हम पब्लिक इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे, या फिर ये की वजह से आपकी सोची समझी रणनीति थी कि इस पर आगे बढ़ेंगे? हमने देखा 10 लाख करोड़, अगर आप स्टेट ग्रांट्स को देख लें तो 13.7 लाख करोड़ का ये पूरा का पूरा पब्लिक इन्वेस्टमेंट हो जाता है। 10 लाख करोड़ है, उसमें स्टेट को जो दे रहे हैं 1.3 लाख करोड़ उसमें शामिल है 10 में ही। मगर विषय ये है कि पब्लिक इन्वेस्टमेंट के द्वारा जो पैसा खर्च होता है उसमें रिटर्न ज्यादा आता है, क्योंकि उस पैसा का हर रुपया का इम्पैक्ट जो सोसाइटी में लगता है वो इन्वेस्टमेंट में, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट में जब आप करते हैं उसके रिपल इफेक्ट ज्यादा होता है, मल्टीप्लायर जो कहते हैं। मगर हाथ में पैसा रखने वाले वो राजनीति बात अगर हम करते हैं उससे इतना मल्टीप्लायर नहीं मिलता। इसलिए हम दृढ़ता से मानते हैं कि यही रूट है जो इकोनॉमी को उठा सकते हैं। जो कोविड के समय से हम हर साल देख रहे हैं उससे पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल रही है, अभी भी उसी पेस में हम ग्रो करना है तो पब्लिक एक्सपेंडिचर ही अच्छा सा श्योर रास्ता है। So, madam, you say that capex is also helping us, prevent the headwinds or deal with it to a large extent. It's going to promote growth potential, job creation, but how much of crowding in of private investment is actually taking place as a result of this kind of massive investment you're doing?
In fact, in the media conference this evening, it was very clearly explained how between 2021, 2022 and now you'll see there has never been a negative impact on private investment because of increasing public investments in infrastructure. The crowding in that we spoke about has been questioned, saying what kind of a crowding in? This is the first time we are hearing. But you see that the private investments, also because we brought the corporate tax down, also we extended the period by which many of them will have to bring in additional capacities or establish new units. All of them together is working now in the favor of private sector to invest. So when you go to the market to borrow, you find many of them are equally able to raise revenues, raise monies in the market, and that has not stopped anybody. And that is exactly what crowding in means. People are able to come in, raise revenues. Banks are able to raise revenues. Private sector is able to raise Indian equity. This is not as though money is coming from elsewhere. So it is the right combination of policies which I think has enabled crowding in, not just that public investments in infrastructure. Right policy together with this. But if you look at a direction, ma'am, in terms of, let's say, the Northeast or some of the aspirational districts, do we see that investments are going in these areas and whether the states are willing to respond with... Yes, yes. In fact, I'm happy to say that Northeast, because we have specifically given funds for them for their infrastructure development and also for their livelihood-related programs, both of which are very successful. Much before this year's budget, during the discussions, many of the Northeast states said, please continue it, it's made a lot of difference for us. And we are anyway continuing it. So it's made a difference for the Northeast, and also many states other than the Northeast also have very clearly said, please continue, we are able to bring in some of the primary asset building for the states through this fund. मैम, आपने अमृतकाल के बजट में जो 4 बड़े पिलर्स हमारे सामने रखे, उसमें महिला सशक्तिकरण पे आपने अपनी राय रखी. अब मैं जो दूसरी स्कीम है आपकी, बड़ी स्कीम पीएम विकास, उस पर आपकी राय जानना चाहता हूँ. वो पूरी स्कीम है क्या? और प्रधानमंत्री को अगर मैं कोट कर पाऊँ, उन्होंने कहा कि परंपरागत रूप से जो सृजन करने वाले विश्वकर्मा हैं इस देश के निर्माता हैं, और सभी विश्वकर्माओं की मेहनत को पहली बार बजट में प्रोत्साहन देने का आपने शुरुआत की है. तो ये पीएम विकास है क्या? कैसे आप उसको मोबिलाइज करेंगी ग्रोथ पोटेंशियल के लिए? उसके लिए डिटेल्स अभी वर्कआउट करना बाकी है, मगर इससे विश्वकर्मा जब हम बोलते हैं सिर्फ एक कम्युनिटी नहीं है, और कई राज्यों में उस नाम पर कोई कैस्ट है, सिर्फ वो नहीं है. देश में जैसे प्रधानमंत्री जी सटीक बोले कि हाथों से और हाथ में पकड़ा हुआ टूल्स से जो क्रिएटिव क्राफ्ट्स करते हैं, क्रिएटिव वर्क करते हैं, उन सब के लिए ये स्कीम के द्वारा प्रोत्साहन देंगे, जिससे युवा भी उस पीढ़ियों से वो कलाकार जो रहते हैं उनको भी इससे बेनिफिट मिलेगा. डिटेल्स प्रोग्राम का हम जल्द से जल्द विवरण देंगे कि कैसे इसको लागू करेंगे. जी. Now, if you look at some of the green aspects of the budget, let me just start with you. You also talk about scrapping of old government vehicles. You're going to provide some funds for that. But is the government, actively adopting e-vehicles? I mean, that you're promoting for the rest of the country? First of all, we want to set an example by saying both central government and state governments, if they want, can go ahead with scrapping their vehicles, inclusive of some of the government promoted ambulances. We think it's important for the government to set an example by scrapping all those 15-year or older vehicles and go in for electrical vehicles, with which we are able to show that we will be able to achieve environment pollution to be brought down, and actually it gives you a better carbon emission point. And therefore that is the reason why we have supported the scrappage policy, which was announced earlier, but we are now coming up with incentivizing it as well. Also sticking with this, there are 500 new waste to wealth plants with an investment of 10,000 crore rupees.
what about the private sector involved in this, ma'am? Because there must be lots of private sector participants who are keen on the waste to wealth. We are not going to exclude them. However, I think the concerned department will have to see how they're going to frame it so that everybody's efforts, because we are right from the beginning of my budget speech today, we have expanded on the thought of Sabka Prayas. Jan Bhagidari is something on which we are definitely placing a lot of interest. We would want private participation and also citizens' participation wherever they can fit in. So that will be one of those routes through which we want to quickly be able to scale up programs. मैम, बजट ने हमेशा ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ साथ ईज़ ऑफ लिविंग पे हमेशा फोकस किया। हमने देखा कि बहुत सारी स्कीम्स को आपने भी जिक्र किया कि पिछले 9 सालों में हमने कहाँ पे अचीवमेंट्स किए हैं। कल का जो इकोनॉमिक सर्वे है उसने बहुत ही ब्यूटीफुली इस चीज़ को डिपिक्ट किया है। आगे जाते हुए आप ये जो इस साल के एलोकेशन में आपने PM आवास योजना पे बहुत पैसा दिया है, करीब 80,000 करोड़ रुपया, और जल जीवन मिशन पे 70,000 करोड़ रुपया मोटे तौर पर। तो ये जो दोनों बड़ी स्कीम्स हैं इंक्लूजन के लिहाज से, आपको लगता है कि आप टारगेट को जो पूरा कर पाएंगे PM आवास योजना और जो नल से जल योजना है? हाँ बिल्कुल, क्योंकि पिछले 2 साल में आपने देखा होगा कि आवास योजना के कितने ऑलमोस्ट सैचुरेशन पॉइंट्स आ रही है। ऊपर से ये PM एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स को अभी ब्लॉक के स्तर पर 500 ब्लॉक्स में ले चल रही हैं। ये आवास योजना और जल जीवन मिशन उस ब्लॉक्स में भी पहुंचेगा। सो टारगेट अचीव करना मुश्किल नहीं है, मगर इसके लिए इसीलिए ही पहले से ही प्रावधान ज़्यादा 79,000 करोड़ PM आवास योजना के लिए। ड्राइव मतलब रीचिंग द लास्ट माइल, वो 7 प्रायोरिटीज में एक प्रायोरिटी रीचिंग द लास्ट माइल है। सेकंड प्रायोरिटी जहां भी लोग जो जिनको वो एलिजिबिलिटी है वहां वो छूट ना जाए, उनको भी इंक्लूड करें। इसीलिए वो रीचिंग द लास्ट माइल का लिस्ट मैंने बनाकर दिखाया। सो आवास योजना उधर पहुंचेगी, पानी भी पहुंचेगी जल के द्वारा। और उसी का एक हिस्सा है जिसमें आपने प्रधानमंत्री PVTG डेवलपमेंट मिशन, एक नया मिशन आप लॉन्च करने जा रहे हैं ऐसे ट्राइबल एरियाज में जहां पर ऐसी बेसिक अमेनिटीज नहीं पहुंच पाई हैं। उसके लिए पर्टिकुलरली पिछड़ा हुआ ट्राइबल, जी, दिस इज पर्टिकुलरली वेरी वल्नरेबल ट्राइब। उन तक अगर उनमें से एक को दूसरे को मगर बाकी सबको नहीं मिला, ऐसे हालात ना हो, वो एकदम पिछड़ा हुआ ट्राइबल। सो फॉर देम एंटायर पॉपुलेशन उनको सब मिले, इसीलिए इतना 15,000 in next 3 years, so that entire primitive tribe as a group will benefect. एकलव्य मॉडल स्कूल भी उसने आपने कहा कि 38,000 टीचर्स इसमें करीब 3.5 लाख टीचर्स का रिक्रूटमेंट करेंगे और 740 एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल में। तो ये बिल्कुल ट्राइबल एरिया का फोकस है। जी मैम, इफ वी लुक एट द हेल्थ सेक्टर, योर गवर्नमेंट हैज built 157 medical colleges, and now you're going to build all those colleges. You're going to bring nursing colleges as well. Is there a time frame? Is co-location? Is that going to happen? Yes. Should be, because this is from 2014 till now that we've established 157. Right. In those we are going to co-locate nursing colleges as well. So that is where. So it should happen sooner because we are not going to build the place up again. Right. Some additional facilities will be given. So it should be happening at the earliest. मैम, अब अगर पेमेंट्स इकोसिस्टम में भारत ने करके दिखाया, अब वो एग्रीकल्चर में आप करना चाहती हैं डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल, और उसके लिए हम ओपन सोर्स शायद एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाने की तैयारी में है। वो एग्जैक्टली है क्या मैम, कैसे उसको काम करेगा? ओपन सोर्स का मतलब ये है कि कोई भी उसमें जोड़ सकते हैं। ये ऐसे ऐप नहीं है जहां आप उस ऐप को डाउनलोड करो, उसको ये करो, उसका चार्ज पे, ऐसे नहीं है। ये पब्लिक यूटिलिटी क्रिएट कर रहे हैं जिससे एग्रीकल्चर में किसान उनका पूरे जो इन्फॉर्मेशन उनको चाहिए वो मिल सकेगा कि अच्छा सीड कहाँ से मिल सके, उनको सोर्स करो, उनको सप्लाई करने के लिए कौन है,
और उसके बाद कल्टीवेशन के समय आपके सॉइल के हेल्थ कैसे हैं, उसके लिए क्या क्या आप करना है, नेचुरल फार्मिंग की ओर अगर आप जाना है कि कैसे जाना है, कृषि विज्ञान केंद्र से आप क्या विषय पाएंगे, और ये न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर, माइक्रो न्यूट्रिएंट, इसको उपयोग कैसे करना, पूरे जानकारी उससे फ्री ऑफ चार्ज इन अ वे किसान को मिलेगा। इसीलिए ये प्लेटफॉर्म ओपन सोर्स करने का सिस्टम से निकल कर आ रही है। और बजट में क्या आप किसान सम्मान निधि योजना को जारी रख रही हैं? बहुत सारे लोगों को मतलब स्पीच में नहीं आया कम से कम, तो ये क्या स्कीम को जारी है, उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है? बिल्कुल जारी है। With you've simplified a lot of the direct taxes, so are you, I mean, is there going to be a lot of increase? Are you hoping that you're going to have many more, I mean, your direct tax collections are going to increase substantially as a result of this? Once looking, I mean, you have a map for your fiscal consolidation, and some arguments, you know, in the public domain are that too much is relied on the GST sector to fill up our coffers, but is the direct tax, that's not true? Because this year I think direct taxes have also shown such buoyancy. You are able to get them, you are able to see that more income is also being generated through direct taxation. So it is not that we rely on GST, which is indirect tax, and think that our coffers are getting filled. Not at all. In fact, on the GST, let me make it very plain, pre-GST, where you were paying for household items at 18% or 20% and so on, some even 30-35%, all of them have been brought down, household items. The tax neutrality was at revenue neutrality was somewhere in the range of 15.5%. It has come down to 11, which means items have become cheaper. So right. GST itself should convey that message that even as it is now, you're paying far lesser on household items than what you paid prior to the introduction of GST. There's no doubt about it. Item-wise, list-wise, I've read it out in the Rajya Sabha, not this time, but once earlier. So GST itself is not going to be something where we are burdening the citizens. There is potential for more work is happening on that. But here, direct taxation this time has also shown such buoyancy that today you can't say this government is only earning from GST, indirect tax, but not from direct. वित्त मंत्री जी, अब एमएसएमई सेक्टर पर मैं आपके बजट का फोकस समझना चाहूँगा और किस तरह से हम एमएसएमई के लिए प्रमोट करने का कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़, एक्सपोर्ट की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप उस पर थोड़ा सा एलोबरेट कर पाएँ प्लीज़। एमएसएमई के लिए इस बजट में बहुत सारे विषय हैं, मगर एक ही जगह पे ना होते हुए पूरे बजट स्पीच आप देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि मैं एक छोटी सी विषय मगर जिसमें बहुत ही अहमियत है जी। कोरोना पैंडेमिक के समय जो एमएसएमई उनके अपने कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट को फुलफिल कर नहीं पाए। मान लीजिए आपके यहाँ एक एमएसएमई आकर एग्रीमेंट किया कि कुछ वस्तु आपको सप्लाई करेंगे या कुछ सर्विस आपको सप्लाई करेंगे, वो कर नहीं पाया कोविड की वजह से। आपके कॉन्ट्रैक्ट में तो कुछ उनको कंडीशंस है और उनका कुछ ये भी है, गारंटीज भी है, मगर आप आज उस गारंटी को इन्वोक करके क्योंकि आपने फेल हो गया है, आप सप्लाई नहीं किया, इसलिए मैं इन्वोक कर सकती हूँ, ऐसे करके आप कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्चुअली। हम सरकार के द्वारा, मतलब सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स में, प्राइवेट का नहीं तो सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स में हम ये ले आ रहे हैं कि उस समय अगर आपसे सर्विस करना असंभव हुआ और आप सर्विस नहीं किया, फिर भी हमने सिर्फ 5% हमारे हाथ में रख के, आप 100 रुपया की गारंटी दिए, 5 रुपया रखे, 95 को आपको वापस कर देंगे। ये बड़ा राहत है एमएसएमई को जो कोविड के समय सफर किया, वो एक किया है। दूसरा, उनका लिमिट्स को भी बढ़ाया, जैसे प्रोफेशनल्स का लिमिट भी बढ़ाया एक्सपेंडिचर में दिखाने के लिए, उसको भी हमने बढ़ाया। सेकंड, थर्ड, एमएसएमई का लिंकेज हम कर रहे हैं
बहुत सारे विषय में ये कोऑपरेटिव्स के द्वारा जहाँ भी वो कोऑपरेटिव स्टोरेज वगैरह बना रहे हैं उसमें भी उनको एमएसएमई से लिंक कर रहे हैं उनके प्रोडक्ट्स को एमएसएमई का प्रोडक्ट्स से। ऐसे करके बहुत सारे स्टेप्स हमने एमएसएमई को राहत के राते क्रेडिट गारंटी के लिए भी 2 लाख करोड़ रुपए वो बढ़ाया, एडिशनल 2 लाख। Ma'am, in terms of sending a signal to the global economy and investors, you've said that financial sector regulators will be requested to carry out comprehensive review of existing regulations, and you've given time limits to decide this. I mean, could you I'm elaborate? not giving time limits. Okay. I'm asking them to give themselves time limit. And for themselves to review, just so we are not sitting with archaic, untouched regulations. But if there are regulations which need to have to be spruced up, they should do it. It's a gentle nudge to the regulators who are independent, who can do things, but we want that to also be citizen-centric. And bring in consultation in the process of deciding what regulation has to be brought in, so that public opinion is also collected. Even that has been mentioned. All eyes are on India now because, I mean, we are the G20 president, but also since the bright spot, the IMF has told us this, and we are targeting to be the 3rd largest economy in the world. Some people wonder, you know, about the race with China. I mean, where do you see India versus China 5 years down? I would see more India becoming Atmanirbhar, India producing many things for itself and also producing for the world. The pace at which we are growing will, with the sustained interest of people and also because of a responsive government. I would also think importantly that the stability which this government has given, because it had received a mandate which was so very clearly a strong mandate, the stability therefore, and also in treating tax matters not with impetuousness but with more level-headed approach, keeping stability and predictability in tax regime, we will definitely be one of those attractive economies. वित्त मंत्री जी, क्या आप जो कौशल विकास योजना का जो 4था चरण है उसको आप थोड़ा सा एलोबरेट कर पाएंगे कि ये किस तरह से हमें हेल्प करेगा आगे जाते हुए, क्योंकि वहाँ पर शायद अपॉर्चुनिटी युवाओं के लिए रोजगार के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा है और ये एक शायद मिशन मोड में आप शुरू करने के लिए जा रहे हैं। साथ में जो पीएम प्रणाम योजना है उसके बारे में अगर आप कुछ बताएं जो आप नई शुरुआत करने जा रहे हैं। आज इंडस्ट्री, क्योंकि कोविड के बाद और टेक्नोलॉजी का इतने सारे विषय भी सामने आ रहे, इंडस्ट्री आज टेक्नोलॉजी को उपयोग करते हुए एफिशिएंसी बढ़ाने में पूरे सक्षम है। उस नज़रिया से अगर आप देखेंगे और इंडस्ट्री के साथ बात करने के समय वो क्लियरली ये बात बोलते हैं कि हमें तो मैन पावर चाहिए, मगर ऐसे मैन पावर चाहिए जो हमारे आज के ट्रांजिशन जो हो रही है इंडस्ट्री 4.0 में जब हम जा रहे हैं, हमें ऐसे लोग चाहिए जो हमारे लिए अप्रोप्रिएट स्किल के साथ आते हैं। इसीलिए गवर्नमेंट ने हमारे तरफ से वो स्किलिंग करने के लिए इंडस्ट्री 4.0 के लिए कैसे स्किल चाहिए वैसे स्किल को ट्रेन करने के लिए हम हमारे अनाउंसमेंट ये प्रधानमंत्री कौशल विकास 4.0 के द्वारा करने के लिए कोशिश करें। अंत में वित्त मंत्री जी, आपके मन में कुछ ऐसी चीज़ जो आपको लगता है कि आप करना चाहती थी लेकिन शायद रिसोर्सेज नहीं थे, वो नहीं कर पाई, कुछ ऐसी चीज़ जो आप अगले बजट में हमें अनाउंस करके इस देश को देना चाहें? नहीं, इस बजट में जितने भी संभव हो और जितने रिक्वेस्ट और चर्चा गोष्ठी में जो सुझाव आए उन सबको अकोमोडेट करने के लिए अभी प्रयत्न हुआ है। मैं को एक्सपेक्ट करती हूँ कि इसका अच्छा रिसेप्शन हो। बहुत धन्यवाद वित्त मंत्री जी बात करने के लिए, तो हमने इस बजट को हमारे सामने, उनकी बारीकियों को हमारे सामने रखने के लिए। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। तो आप देख रहे थे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की दूरदर्शन डीडी न्यूज के साथ ये विशेष इंटरव्यू, जिसमें हमारे सहयोगी अजय मिश्रा और मार्क लिन जो उनको इंटरव्यू कर रहे थे, जिसमें जो तमाम आज बजट में घोषणाएं की गई हैं उन्हीं के बारे में, उनके पीछे क्या सोच रही, क्या कुछ रहा, उसको आगे वित्त मंत्री ने डीडी न्यूज के साथ
साझा किया, लेकिन एक बात स्पष्ट जो एक बड़ी तस्वीर निकलकर सामने आती है वो ये कि भविष्य को ध्यान में रखते हुए मौजूदा वक्त में जो देश के सामने चुनौतियां हैं उनसे पार पाने के लिए ही इस बजट को सामने लाया गया है, जिसमें हम इंडस्ट्री 4.0 के लिए हमारे आज के युवाओं को कौशल 4.0 के जरिए तैयार करने की सोच के साथ साथ एक सरल टैक्स की एक व्यवस्था के साथ साथ महिलाओं को और तमाम वर्गों को उनके विकास तक ले जाने के लिए ये बजट प्रावधान किए गए हैं और इसी बड़ी सोच को आगे लेकर सरकार बढ़ रही है। और ऐसे में वित्त मंत्री ने इस बात को भी स्पष्ट किया है कि चाहे हम महिलाओं युवाओं 10 में से 10 मैं बताता हूं क्यों। देखिए, ऐसा अभूतपूर्व बजट मैंने नहीं देखा है। उसमें कुछ रीजन है। पहला मैं 3 बताऊंगा। पहला रीजन ये है कि ये बजट सबको छुआ है, हर पक्ष को छुआ है। आप गरीब की बात करिए, गरीब को सब कुछ सरकार खुद विभिन्न स्कीमों के तहत दे रही है। आप मिडिल क्लास की बात करिए, लगभग 7 लाख तक आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। जो focus in terms of, there are millets, there's also the 20 lakh agri credit, or does it stand out for youngsters to look at some opportunities that are different, and if they are interested in the agriculture sector? I mean, you've talked about 4.0 and things like that, which I know youngsters are interested in, but there may be some who might be not less so tech savvy. Where would they go? I mean, but actually tech savvy or not tech savvy, both have equal opportunity when you're looking at the possibilities which can emerge from agriculture, fisheries, animal husbandry and so on, especially now even through the cooperation we are bringing in panchayat levels, storage capacities and a big scale. So in all this, technology plays a big role, and those who don't have technology or inclination for it can still be a part of this scheme of things, where they can find logistics, for instance, storage and the type of storage, value addition from the stored grains or the products. These are areas in which technology or no technology, immense possibility lies, and there is also a gap in that the possibility is got to be fixed in those areas where there is gap. Product is there, demand is there. If you only can bridge the gap through various different ways, supply networks, logistic networks, value addition to the grains, storage of the grains, preservation of grains, aggregating the grains which are produced, immense possibility. So that is where this accelerator fund will also come in. मैम, अगर अब हम बात करें मैम आपके वित्तीय अनुशासन की, जिसको हम फिस्कल कंसोलिडेशन कहते हैं, जब पूरी दुनिया में सरकारें अपनी जनता के लिए खर्च कर रही हैं, आप वित्तीय अनुशासन दिखा रही हैं। ये आपने 6.4 का जो वायदा किया था इस साल आपने स्टिक किया, अगली बार आप 5.9, उसके बाद ग्लाइडिंग पाथ जो आपने पहले तय किया था 2025, 26 के लिए, उस पर भी आप स्टिक कर रही हैं। ये वित्तीय अनुशासन कैसे आ रहा है मैम? मतलब मैनेजमेंट कैसे हो पा रहा है, और फिर जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स हैं उसके लिए आपका क्या सिग्नल है इस बजट के जरिए या फिर इस फिस्कल कंसोलिडेशन के जरिए? ये कैसे हो रहा है, इसीलिए मैं बार बार ये बात बोलती हूँ कि मैनेजमेंट ऑफ योर फाइनेंस, ये नहीं है कि बजट के समय आप इस डिपार्टमेंट को इतना दिए, उनके लिए इतना दिए और उनके लिए भी दे दिया, और रेवेन्यू रेसिंग में गैप्स है उसको फिलअप नहीं करते हो। दोनों तरफ जो रेवेन्यू गैप्स है उसको फिलअप करो, बंद करो, और एफिशिएंसी ले आओ। टेक्नोलॉजी को उपयोग करते हुए आज हम ट्रेल कर सकते हैं कौन नहीं पे कर रहा, जो पे करने लायक उतने बारीकी से एक इनकम और रेवेन्यू बढ़ाने के लिए इफेक्ट हो रही। दूसरी तरफ जब डिपार्टमेंट्स को खर्च करने के लिए पैसा देते हैं, क्या वो पूरे के पूरे उपयोग में आ रही है कि नहीं आ रही? एफिशिएंसी इन इफेक्टिव यूटिलाइजेशन, पैसा नीचे तक अगर नहीं पहुंचता, आपके मकसद जो है पैसा पहुंचने में डिमांड बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, वो तो आप अचीव कर नहीं पाएंगे। इसीलिए मैं मानती हूं कि फिनांस मिनिस्ट्री का काम एकदम बजट प्रेजेंटेशन के ऊपर जितने ध्यान देना है उससे 3 गुना अधिक पूरे साल में इम्प्लीमेंटेशन में, लूप होल प्लग करने में, इवेशन रोकने में, और जहां लूप होल्स को उपयोग करते हुए पैसा कहीं और जा रहा उसको रोकने में, एक्शन लेने में, और जहां बार बार गलतियां हो रही है उनको उनके ऊपर एक्शन लेके उनके संपत्ति को लेने में कोर्ट के द्वारा। हर एस्पेक्ट ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री
पूरे के पूरे काम ऑन देयर टोस करना चाहिए। बैंकिंग सेक्टर में उदाहरण के लिए मैं बोल रही हूँ, कोविड के समय वो इमरजेंसी क्रेडिट गारंटी लिक्विडिटी स्कीम गवर्नमेंट अनाउंस किया, सरकार ने आपको गारंटी के तरह और गारंटी देते हुए पीछे खड़े हो रही है। अगर बैंक एफिशिएंटली इसको इम्प्लीमेंट नहीं करते, स्कीम का तो बिल्कुल मकसद ही फेलियर हो जाता है। सो उस समय उनके ऊपर उसी हद में और उसी लेवल पर आज क्रेडिट को सबको पहुंचाने में बैंक की जिम्मेदारी है। सो मैं मानती हूँ बैंक हर एक सेक्टर फिनांस मिनिस्ट्री के अंदर डिपार्टमेंट पे डिपार्टमेंट टॉप नॉच परफॉर्मेंस करने के ही कंपटीशन हो रहा है। उसके कारण ही आज हम इतने दुनिया में चैलेंजेस रहने के बाद भी आज हम खड़े होकर के बोल सकते हैं ठीक है, हमारे रेवेन्यू बोएंसी इतना है, खर्च में कोई वेस्ट नहीं है, पूरे के पूरे यूटिलाइजेशन हो रही है, बैंक सेक्टर जो करना है वो सब रूरल तक पहुंच रही है, क्रेडिट अवेलेबल हो रही है। ऐसे करके हर एक एंगल में इकोनॉमी को ध्यान से चलाना पड़ता है। और एक कॉलरली मैम इससे जुड़ा हुआ सवाल ये कि जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट में आपने लगातार 3 सालों में बढ़ोतरी की वो कैसे हुआ, और क्या अब ये मतलब आपने सोच समझ करके ये कल्चर एक तरह से रखा कि हम पब्लिक इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे, या फिर कोरोना की वजह से आपकी सोची समझी रणनीति थी कि इस पर आगे बढ़ेंगे? हमने देखा 10 लाख करोड़, अगर आप स्टेट ग्रांट्स को देख लें तो 13.7 लाख करोड़ का ये पूरा का पूरा पब्लिक इन्वेस्टमेंट हो जाता है। 10 लाख करोड़ है, उसमें स्टेट को जो दे रहे हैं 1.3 लाख करोड़ उसमें शामिल है 10 में ही। मगर विषय ये है कि पब्लिक इन्वेस्टमेंट के द्वारा जो पैसा खर्च होता है उसमें रिटर्न ज्यादा आता है, क्योंकि उस पैसा का हर रुपया का इम्पैक्ट जो सोसाइटी में लगता है वो इन्वेस्टमेंट में, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट में जब आप करते हैं उसके रिपल इफेक्ट ज्यादा होता है, मल्टीप्लायर जो कहते हैं। मगर हाथ में पैसा रखने वाले वो राजनीति बात अगर हम करते हैं उससे इतना मल्टीप्लायर नहीं मिलता। इसलिए हम दृढ़ता से मानते हैं कि यही रूट है जो इकोनॉमी को उठा सकते हैं। जो कोविड के समय से हम हर साल देख रहे हैं उससे पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल रही है, अभी भी उसी पेस में हम ग्रो करना है तो पब्लिक एक्सपेंडिचर ही अच्छा सा श्योर रास्ता है। So, madam, you say that capex is also helping us, prevent the headwinds or deal with it to a large extent. It's going to promote growth potential, job creation, but how much of crowding in of private investment is actually taking place as a result of this kind of massive investment you're doing? In fact, in the media conference this evening, it was very clearly explained how between 2021, 2022 and now you'll see there has never been a negative impact on private investment because of increasing public investments in infrastructure. The crowding in that we spoke about has been questioned, saying what kind of a crowding in, this is the first time we are hearing. But you see that the private investments, also because we brought the corporate tax down, also we extended the period by which many of them will have to bring in additional capacities or establish new units. All of them together is working now in the favor of private sector to invest. So when you go to the market to borrow, you find many of them are equally able to raise revenues, raise monies in the market, and that has not stopped anybody. And that is exactly what crowding in means. People are able to come in, raise revenues. Banks are able to raise revenues. Private sector is able to raise Indian equity. This is not as though money is coming from elsewhere. So it is the right combination of policies which I think has enabled crowding in, not just that public investments
in infrastructure. Right policy together with this. But if you look at the direction, ma'am, in terms of, let's say, the Northeast or some of the aspirational districts, do we see that investments are going in these areas, and whether the states are willing to respond with? Yes. Yeah. In fact, I'm happy to say that Northeast, because we have specifically given funds for them for their infrastructure development and also for their livelihood-related programs, both of which are very successful. Much before this year's budget, during the discussions, many of the Northeast states said, please continue it. It's made a lot of difference for us. And we are anyway continuing it. So it's made a difference for the Northeast. And also many states other than the Northeast also have very clearly said, please continue. We are able to bring in some of the primary asset building for the states through this fund. मैम, आपने अमृतकाल के बजट में जो 4 बड़े पिलर्स हमारे सामने रखे, उसमें महिला सशक्तिकरण पे आपने अपनी राय रखी। अब मैं जो दूसरी स्कीम है, आपकी बड़ी स्कीम पीएम विकास, उस पर आपकी राय जानना चाहता हूँ। वो पूरी स्कीम है क्या? और प्रधानमंत्री को अगर मैं कोट कर पाऊँ, उन्होंने कहा कि परंपरागत रूप से जो सृजन करने वाले विश्वकर्मा हैं इस देश के निर्माता हैं, और सभी विश्वकर्माओं की मेहनत को पहली बार बजट में प्रोत्साहन देने का आपने शुरुआत की है। तो ये पीएम विकास है क्या? कैसे आप उसको मोबिलाइज करेंगी ग्रोथ पोटेंशियल के लिए? उसके लिए डिटेल्स अभी वर्कआउट करना बाकी है, मगर इससे विश्वकर्मा जब हम बोलते हैं सिर्फ एक कम्युनिटी नहीं है, और कई राज्यों में उस नाम पर कोई कैस्ट है, सिर्फ वो नहीं है। देश में जैसे प्रधानमंत्री जी सटीक बोले कि हाथों से और हाथ में पकड़ा हुआ टूल्स से जो क्रिएटिव क्राफ्ट्स करते हैं, क्रिएटिव वर्क करते हैं, उन सब के लिए ये स्कीम के द्वारा प्रोत्साहन देंगे, जिससे युवा भी उस पीढ़ियों से वो कलाकार जो रहते हैं उनको भी इससे बेनिफिट मिलेगा। डिटेल्स प्रोग्राम का हम जल्द से विवरण देंगे कि कैसे इसको लागू करेंगे। जी। Now, if you look at some of the green aspects of the, let me just start with you. You also talk about scrapping of old government vehicles. You're going to provide some funds for that. But is the government, actively adopting e-vehicles? I mean, that you're promoting for the rest of the country? First of all, we want to set an example by saying both central government and state governments, if they want, can go ahead with scrapping their vehicles, inclusive of some of the government promoted ambulances. We think it's important for the government to set an example by scrapping all those 15-year or older vehicles and go in for electrical vehicles, with which we are able to show that we will be able to achieve environment pollution to be brought down, and actually it gives you a better carbon emission point. And therefore that is the reason why we have supported the scrappage policy, which was announced earlier, but we are now coming up with incentives as well. Also sticking with this, there are 500 new waste to wealth plants with an investment of 10,000 crore rupees. What about the private sector involved in this, ma'am? Because there must be lots of private sector participants who are keen on the waste to wealth. We are not going to exclude them. However, I think the concerned department will have to see how they're going to frame it so that everybody's efforts, because we are right from the beginning of my budget speech today, we have expanded on the thought of Sabka Prayas. Jan Bhagidari is something on which we are definitely placing a lot of interest. We would want private participation and also citizens' participation wherever they can fit in. So that will be one of those routes through which we want to quickly be able to scale up programs. मैम, बजट ने हमेशा ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस का साथ साथ ईज़ ऑफ लिविंग पे हमेशा फोकस किया। हमने देखा कि बहुत सारी स्कीम्स को आपने भी जिक्र किया कि पिछले 9 सालों में हमने कहाँ पे अचीवमेंट्स किए हैं। कल का जो इकोनॉमिक सर्वे है उसने बहुत ही ब्यूटीफुली इस चीज़ को डिपिक्ट किया है। आगे जाते हुए आप ये जो इस साल के एलोकेशन में आपने पीएम आवास योजना पे बहुत पैसा दिया है, करीब 80,000 करोड़ रुपया, और जल जीवन मिशन पे 70,000 करोड़ रुपया मोटे तौर पर। तो ये जो दोनों बड़ी स्कीम्स हैं इंक्लूजन के लिहाज से, आपको लगता है कि आप टारगेट को जो पूरा कर पाएंगे पीएम आवास योजना और जो नल से जल योजना है? हाँ बिल्कुल, क्योंकि
पिछले 2 साल में आपने देखा होगा कि आवास योजना के कितने ऑलमोस्ट सैचुरेशन पॉइंट्स आ रही है। ऊपर से ये पीएम एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स को अभी ब्लॉक के स्तर पर 500 ब्लॉक्स में ले चल रही हैं। ये आवास योजना और जल जीवन मिशन उस ब्लॉक्स में भी पहुंचेगा। सो टारगेट अचीव करना मुश्किल नहीं है, मगर इसके लिए इसीलिए ही पहले से ही प्रावधान ज्यादा 79,000 करोड़ पीएम आवास योजना के लिए। ड्राइव मतलब रीचिंग द लास्ट माइल, वो 7 प्रायोरिटीज में एक प्रायोरिटी रीचिंग द लास्ट माइल है। सेकंड प्रायोरिटी जहां भी लोग जो जिनको वो एलिजिबिलिटी है वहां वो छूट ना जाए, उनको भी इंक्लूड करें, इसीलिए वो रीचिंग द लास्ट माइल का लिस्ट मैंने बनाकर दिखाया। सो आवास योजना उधर पहुंचेगी, पानी भी पहुंचेगी जल के द्वारा। और उसी का एक हिस्सा है जिसमें आपने प्रधानमंत्री पीवीटीजी डेवलपमेंट मिशन, एक नया मिशन आप लॉन्च करने जा रहे हैं ऐसे ट्राइबल एरियाज में जहां पर ऐसी बेसिक अमेनिटीज नहीं पहुंच पाई हैं। उसके लिए पर्टिकुलरली पिछड़ा हुआ ट्राइबल, जी जी जी, दिस इज पर्टिकुलरली वेरी वल्नरेबल ट्राइब। उन तक अगर उनमें से एक को दूसरे को मगर बाकी सबको नहीं मिला, ऐसे हालात ना हो, वो एकदम पिछड़ा हुआ ट्राइबल। सो फॉर देम एंटायर पॉपुलेशन उनको सब मिले, इसीलिए इतना 15,000 rupees in next 3 years, so that entire primitive tribe as a group will benefit. एकलव्य मॉडल स्कूल भी उसने आपने कहा कि 38,000 टीचर्स, इसमें करीब 3.5 लाख टीचर्स का रिक्रूटमेंट करेंगे, 740 एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल में। तो ये बिल्कुल ट्राइबल एरिया का फोकस है। जी मैम, इफ वी लुक एट द हेल्थ सेक्टर, योर गवर्नमेंट हैज built 157 medical colleges, and now you're going to build all those colleges, you're going to bring nursing colleges as well. Is there a time frame? Is co-location. Is that going to happen like in this financial year or what? Well, I'm not sure it will be completed within a year, but sooner it should be, because this is from 2014 till now that we've established 157. Right. In those we are going to co-locate nursing colleges as well. So that is where. So it should happen sooner, because we are not going to build the place up again. Right. Some additional facilities will be given. So it should be happening at the earliest. मैम, अब अगर हम इस हॉस्पिटल ऑलरेडी है, यू हैव टू बिल्ड द नर्सिंग कॉलेज। एक चीज़ मैम आपने ये भी कही कि जो डिजिटल पेमेंट्स इकोसिस्टम में भारत ने करके दिखाया, अब वो एग्रीकल्चर में आप करना चाहती हैं डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल, और उसके लिए हम ओपन सोर्स शायद एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाने की तैयारी में है। वो एग्जैक्टली है क्या मैम, कैसे उसको काम करेंगे? ओपन सोर्स का मतलब ये है कि कोई भी उसमें जोड़ सकते हैं। ये ऐसे ऐप नहीं है जहाँ आप उस ऐप को डाउनलोड करो, उसको ये करो, उसका चार्ज पे, ऐसे नहीं है। ये पब्लिक यूटिलिटी क्रिएट कर रहे हैं जिससे एग्रीकल्चर में किसान उनका पूरे जो इन्फॉर्मेशन उनको चाहिए वो मिल सकेगा, कि अच्छा सीड कहाँ से मिल सके, उनको सोर्स करो, उनको सप्लाई करने के लिए कौन है, और उसके बाद कल्टीवेशन के समय आपके सॉइल के हेल्थ कैसे हैं, उसके लिए क्या क्या आप करना है। नेचुरल फार्मिंग की ओर अगर आप जाना है कि कैसे जाना है, कृषि विज्ञान केंद्र से आप क्या विषय पाएंगे, और ये न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर, माइक्रो न्यूट्रिएंट, इसको उपयोग कैसे करना, पूरे जानकारी उससे फ्री ऑफ चार्ज इन अ वे किसान को मिलेगा। इसीलिए ये प्लेटफॉर्म ओपन सोर्स करने का सिस्टम से निकल कर आ रही है। और बजट में क्या आप किसान सम्मान निधि योजना को जारी रख रही हैं? बहुत सारे लोगों को मतलब स्पीच में नहीं आया कम से कम, तो ये क्या स्कीम को जारी है, उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है? बिल्कुल जारी है। With you've simplified a lot of the direct taxes, so is there going to be a lot of increase? Are you hoping that you're going to have many more? Your direct tax collections are going to increase substantially as a result of this. Once looking, you have a map for your fiscal consolidation, and some arguments, in the public domain are that too much is relied on the GST sector to fill up our coffers. But
is the direct tax. That's not true. Because this year, I think direct taxes have also shown such buoyancy. You are able to get them. You are able to see that more income is also being generated through direct taxation. So it is not that we rely on GST, which is indirect tax, and think that our coffers are getting filled. Not at all. In fact, on the GST, let me make it very plain. Pre-GST, where you were paying for household items at 18% or 20% and so on, some even 30-35%, all of them have been brought down. Household items. The tax neutrality was at revenue neutrality was somewhere in the range of 15.5%. It has come down to 11, which means items have become cheaper. So right. GST itself should convey that message that even as it is now, you're paying far lesser on household items than what you paid prior to the introduction of GST. There's no doubt about it. Item-wise, list-wise, I've read it out in the Rajya Sabha, not this time, but once earlier. So GST itself is not going to be something where we are burdening the citizens. There is potential for more work is happening on that. But here, direct taxation this time has also shown such buoyancy that today you can't say this government is only earning from GST indirect tax, but not from direct. वित्त मंत्री जी, अब एमएसएमई सेक्टर पर मैं आपके बजट का फोकस समझना चाहूँगा और किस तरह से हम एमएसएमई के लिए प्रमोट करने का कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़, एक्सपोर्ट की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप उस पर थोड़ा सा एलोबरेट कर पाएँ प्लीज़। एमएसएमई के लिए इस बजट में बहुत सारे विषय हैं, मगर एक ही जगह पे ना होते हुए पूरे बजट स्पीच आप देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि मैं एक छोटी सी विषय मगर जिसमें बहुत ही अहमियत है जी। कोरोना पैंडेमिक के समय जो एमएसएमई उनके अपने कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट को फुलफिल कर नहीं पाए। मान लीजिए आपके यहाँ एक एमएसएमई आकर एग्रीमेंट किया कि कुछ वस्तु आपको सप्लाई करेंगे या कुछ सर्विस आपको सप्लाई करेंगे, वो कर नहीं पाया कोविड की वजह से। आपके कॉन्ट्रैक्ट में तो कुछ उनको कंडीशंस है और उनका कुछ ये भी है, गारंटीज भी है, मगर आप आज उस गारंटी को इन्वोक करके आप क्योंकि आपने फेल हो गया है, आप सप्लाई नहीं किया, इसलिए मैं इन्वोक कर सकती हूँ, ऐसे करके आप कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्चुअली। हम सरकार के द्वारा, मतलब सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स में, प्राइवेट का नहीं, तो सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स में हम ये ले आ रहे हैं कि उस समय अगर आपसे सर्विस करना असंभव हुआ और आप सर्विस नहीं किया, फिर भी हमने सिर्फ 5% हमारे हाथ में रख के, आप 100 रुपया की गारंटी दिए, 5 रुपया रखे, 95 को आपको वापस कर देंगे। ये बड़ा राहत है एमएसएमई को जो कोविड के समय सफर किया, वो एक किया है। दूसरा, उनका लिमिट्स को भी बढ़ाया, जैसे प्रोफेशनल्स का लिमिट भी बढ़ाया एक्सपेंडिचर में दिखाने के लिए, उसको भी हमने बढ़ाया। सेकंड, थर्ड, एमएसएमई का लिंकेज हम कर रहे हैं बहुत सारे विषय में। ये कोऑपरेटिव्स के द्वारा जहां भी वो कोऑपरेटिव स्टोरेज वगैरह बना रहे हैं, उसमें भी उनको एमएसएमई से लिंक कर रहे हैं, उनके प्रोडक्ट्स को एमएसएमई का प्रोडक्ट्स से। ऐसे करके बहुत सारे स्टेप्स हमने एमएसएमई को राहत के राते। क्रेडिट गारंटी के लिए भी 2 लाख करोड़ रुपए वो बढ़ाया, एडिशनल 2 लाख। Ma'am, in terms of sending a signal to the global economy and investors, you've said that 10 में से 10 मैं बताता हूँ क्यों। देखिए, ऐसा अभूतपूर्व बजट मैंने नहीं देखा है, उसमें कुछ रीजन है। पहला मैं 3 बताऊंगा। पहला रीजन ये है कि ये बजट सबको छुआ है, हर पक्ष को छुआ है। आप गरीब की बात करिए, गरीब को सब कुछ सरकार खुद विभिन्न स्कीमों के तहत दे रही है। आप मिडिल क्लास की बात करिए, लगभग 7 लाख तक आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। आप अमीर की बात करिए,
बोलने दीजिए ना। आप अमीर के बात करिए, 42% पहले हाईएस्ट टैक्स रेट था जो कि 39% हुआ। तो आप गरीबों के बारे में, मिडिल क्लास के और अमीरों के बारे में अब सरकार ने सोचा है, पहली बार ऐसा हुआ है, पहली बात थी। दूसरी बात यह है कि पहली बार टूरिज्म पे इतना फोकस किया गया है और टूरिज्म हमारे देश में इतनी संभावनाएं हैं, हम कितने सिंगापुर और कितने जो है दुबई यहाँ बन सकते हैं अगर आप टूरिज्म पे ठीक से फोकस कर लें। जो 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी है वो कम से कम $1 ट्रिलियन तो आपके टूरिज्म से कुछ सालों में आ सकती है। मतलब सर आपने 10 में से 10 दिया, आपको कोई कमी नहीं नजर आई, कुछ भी बेहतर की उम्मीद नहीं थी, मतलब परफेक्ट था। परफेक्ट है। और तीसरी बात यह है कि जो कैपेक्स पर इतना ज्यादा एक्सपेंस किया गया है वो एक जो है 10.5 लाख करोड़ के आसपास हो गया है। तो अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर फोकस कर रहे हो, आप टूरिज्म के ऊपर फोकस करने जा रहे हो, आप अमीर गरीब और मिडिल क्लास सबके ऊपर आपने फोकस किया है। इससे बेहतर तो महिलाओं के बारे में बात करें, किसानों के बारे में बात करें। अब 40 सेकंड रखेंगे, 40 सेकंड। हाँ जी, सेंसेक्स 1100 पॉइंट अप है, तो शेयर मार्केट ने क्लियरली थम्स अप दिया है। शेयर मार्केट जो इकोनॉमी का एक इंडिकेटर है, क्लियरली थम्स अप दे रहा है, क्लियरली सैल्यूट दे रहा है। आकाश उत्साहित है, वैसा ही देश के विकास भी उत्साह में। अशोक जी स्तब्ध तो नहीं है ना सर? ये बात सुन के मैं स्तब्ध हूँ कि शेयर मार्केट इंडिकेटर है। हमारे यहाँ शेयर मार्केट कई बार सिर्फ फॉरेन इन्वेस्टर्स की वजह से ऊपर चला है। मैं ये मानता नहीं। 81 करोड़ लोग आज भीख मांग के खाना खा रहे हैं और उसके बाद आप शेयर मार्केट का 1100 का इंडेक्स बताते हो कि देश का इंडेक्स है। जब बाजार डूब जाता है तो कहते हैं ना अर्थव्यवस्था डूब गई। नहीं, अर्थव्यवस्था बिल्कुल नहीं डूबती, कोई फर्क नहीं पड़ता। बाजार आप नहीं कहते सर, मतलब सट्टोरियों को फर्क पड़ता है और ये सट्टा खेलने वालों का हो गया होगा। तो ये बजट ठीक है। एक इंपॉर्टेंट बात, इनकम, एक मिनट आकाश जी, एक मिनट, इंडिकेटर है। ऐसे कैसे दुनिया मानती है कि स्टॉक मार्केट इकोनॉमी का इंडिकेटर है। स्टॉक मार्केट कब बढ़ती है? जब इकोनॉमी जो है तरक्की करती है, तेजी में आती है, कंपनियों को मुनाफे बढ़ते हैं। स्टॉक मार्केट में आज 2 लाख रुपए कमाने वाला भी जो है पैसा लगाता है। स्टॉक मार्केट में दुनिया भर के इन्वेस्टर्स लगा रहे हैं। और स्टॉक मार्केट में नंबर दे रहे थे नंबर अभी तक 10 में से 9.5, 10 में से 10 सर। एक इंपॉर्टेंट बात, एक इंपॉर्टेंट बात जो रह गई अभी सब ध्यान में लानी चाहिए कि एमएसएमई को लेकर एक बदलाव किया गया है इनकम टैक्स के माध्यम से, कि जो मेरा खर्चा एमएसएमई को देना है किसी ने, वो तभी अलाउ होगा पेमेंट बेसिस पे। यानी कि मैं एक बिजनेसमैन हूं, मैं एक कंपनी हूं, मैंने एमएसएमई से कुछ माल खरीदा और उसको मुझे पेमेंट करनी है, वो पेमेंट तभी अलाउ होगी इनकम टैक्स में अगर आप पेमेंट हो जाएगी, क्रेडिट पे नहीं होगा अलाउ। यानी कि जो एमएसएमई की पेमेंट डूबती थी उसको बचाने का तरीका ढूंढा गया। अब नंबर दे दीजिए सर, 10 में से कितने दे रहा हूं आपको, नंबर दीजिए आपके हिसाब से, मतलब सारे चल रहे हैं 10 में से 9.5, 10। मेरी बात तो सुनिए। देखिए सबसे गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट, गुड। हाँ